काफ़ी है और अल्लाह ताला से मोहब्बत करने भी काफ़ी है। तो इसलिए हम डिले के बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे सेशन में 6 प्रेजेंटेशन है। पहली प्रेजेंटेशन जो है वो डॉक्टर हामिद अतीक की तरफ से है। हामिद साहब जो हैं वो बेंगोलियन है, 91 की ग्रेजुएट है और उसके बाद ये सिविल सर्विस में चले गए और इनकम टैक्स के महकमे में, और उसके बाद जो वफाकी इदारा महसूलात है FPR उसके रुकन है। और इसके अलावा इन्होंने और बहुत से अच्छे काम किए। कोविड के टाइम में इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने मुल्क भर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई थी उसके इंचार्ज थे और जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि उसको उन्होंने रन आउट नहीं होने दिया। और अभी हाल ही में जो फ्लड की सिचुएशन, आपको पता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत तबाही हुई है। बहुत से लोग अभी भी बेसुर सामान हैं, बेघर हैं और इंसानों का, फसलों का, जानवरों का बहुत नुकसान हुआ है। तो हामिद साहब ने ये UK 8 के कोऑर्डिनेटर के लिए काम करते हैं। तो इनकी जिम्मेदारी लगाई थी हुकूमत ने कि जो सैलाब से होने वाले नुकसान का नज़र लगाए और दैट गिव्स अस एन ओवरव्यू के मुल्क में क्या हालात हैं, खासतौर पर जो फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक और इंक्लूडिंग हाउसिंग के। तो ये इस लिहाज से रेलेवेंट है कि हाउसिंग ऑब्वियसली इज अ बेसिक ह्यूमन नीड और इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू health related outcomes. So Hamid hopefully will set the scene, or after that we have very distinguished speakers. So as we go along, I will introduce them. So Hamid, I think we can take over. This is a work done by the REMIT program of FCDO of the government and under the UK 8 project. This early assessment of floods were done, which was presented in the COP22 also. So I'll be briefly talking about in the next 10 to 15 minutes about the magnitude of the losses and the recovery effort that is going on or the recovery direction. So Pakistan, unluckily, is amongst the top 10 countries which are most vulnerable to the climate change. और इस प्रकार से हमारे जो है वो फुटप्रिंट जो है एनवायरनमेंट को खराब करने का इट इज ओनली लेस देन 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ग्रीन हाउस। हमारी इंडस्ट्री का जो है हम इतने कम इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, only 4% of the total Pakistan pollution is caused by industry. The rest of it is power and automobile. We are, in fact, a recipient of this sort of climate adverse effects originating from somewhere else in the world. So, unlucky and we are now suffering from droughts and flash floods and these sort of natural calamities. This is the magnitude of the losses. 33 million people have been displaced, which means 1 out of 7 people. Then nearly 8 million displaced, 33 million are affected, 1,700 people died, and there was a severe heat wave before the floods. And as a result, we suffered from the crop losses as well as the load shedding we were observing. It was a very severe heat wave. Previously, 1 in 1,000 year event. And food insecure population is likely to increase from 7 million to will double probably. These are early estimates. We hope that the wheat sowing of sin is not affected, but since water is still there and sin contributes to about 30% of the 50 million tons of wheat we produce, so there is a danger that it might be
the case that we have to import about 10 million tons of wheat this year in worst case scenario, but hopefully we will be able to recover much of the land which is still inundated by water. Next slide. So financial losses, this is again an early estimate, 14.659 million is the damage, and total economic losses are 15.2. Our estimated needs are about $16 billion, which is very difficult for a country, a poor country like Pakistan, which has a GDP of about $300 and something billion. So this is the area-wise losses that we have suffered, and you can see the damages, losses and needs which have been bifurcated across provinces and special regions, which is ADK and Gilgit-Baltistan. And you can see that what is the amount of damage. और ये हमारे जैसे मुल्क के लिए जहाँ IMF के प्रोग्राम में हम $6 बिलियन का 3 साल हमें मिलते हैं पैसे लोन के, उस जैसे मुल्क में इस तरह का $30 बिलियन का अरेंजमेंट would be very difficult and testing task. This is the estimate of the loss of employment or province. So you can see the major suffering area is our agriculture sector. उसमें आपको जो पहला ग्रे बार नजर आ रहा है कि सिल्क का लॉस है, जहाँ पे जो स्टैंडिंग क्रॉप्स जो कॉटन का बिल्कुल खत्म हो गया है, में से भी हम समझ रहे हैं कि शुगर केन भी काफ़ी सारा जो है उसका नुकसान हो गया है. बट nevertheless, these are the estimation. You can see the yellow bar of Balochistan. Balochistan की जो agrarian economy है, which was somehow responsible for fruits, और ये वहाँ की local population है, नसीराबाद वगैरह के इलाके में गन्नों की फैक्ट्री थी, वहाँ पे भी we are expecting के काफ़ी बड़े losses वहाँ पे नजर आ रहे हैं. So the problem जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, which it is showing that कि हमारे पास पहले भी फ्लड्स आते हैं, 10-12 भी बहुत बड़े फ्लड्स आए हैं, बट हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो खुली बात पर बात होगी, has not improved to cater for these situations, और हर दफ़ा हम उसी किस्म के challenges से गुजरते हैं. One thing we need to remember is that this year this floods have not been on the traditional pattern कि झेलम और चिनाब और सिंध में पानी आ जाता था और वो यहाँ से गुजरता था. This time it has been only the Indus River, और इसकी वजह से ये सारा जो है ऊपर से फ्लैश कर रहे हैं, और बजाय जो आपका कलाम का और स्वाद का दरिया है, it's not been respecting the river boundaries, और सिंध के कच्चे के इलाके में भी हमने हाउसिंग बना ली, और उसका नुकसान ये हुआ है कि we lost a lot. और this time around जब हम resilient housing की बात करेंगे, we need to remember कि we have to respect the river waterways, और उससे आगे हमने वहाँ पे हमने permanent जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. ये स्टेप्स हैं इसकी मिटिगेशन के. ऑब्वियसली इस पर डिटेल में बात होगी. पॉलिसी की अर्बन और हाउसिंग प्लानिंग जो है रूरल की, कहाँ पे घर बनने और कहाँ पे नहीं बनने, और किस स्ट्रक्चर पे बनने किस स्ट्रक्चर पे नहीं बनने. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दिस थ्रेट ऑफ अर्बन फ्लडिंग और इस तरह से रूरल फ्लडिंग जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. एंड दीज आर एकेडमिक थिंग्स वी आर प्रेजेंटिंग टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट स्लाइड चलाइए. और लेसन टू बी लर्न कि इसको हमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्पेशली जो इम्पोर्टेड रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन है, उसके लिए हमें कुछ फॉरेन हेल्प की ज़रूरत है, और होपफुली इट विल कम इन, बट नेवरदलेस वी हैव टू डू समथिंग बाय आवरसेल्व्स, और हमें कुछ इनोवेशन करनी है, और दोबारा से इन लोगों को जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको घर भी बनाने हैं, और इनको हमें रोज़गार भी देना है. That is all I wanted to convey to you to set the scene कि आगे चल के आपको जो बाकी लोग वो बताएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल
I just wanted to ask you that I recently visited मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ है JSN में, but I still see there is a lot of after Dalu or Badi, there is still a lot of water is still there. So is there a possibility to get it evacuated? That water that evacuation is there a possibility? या वो अपने पे natural तरीके से ही it will just go off? क्योंकि I think वो मैंने देखा ना वहाँ पे कहीं तमाम फसलें खत्म हो गई, उनके खजूर की जो सारी की सारी प्रोड्यूस होती थी वो भी सारी खत्म हो गई, खजूर के तरफ उसमें चले गए, खास तौर पर जो गैम्बेट का एरिया है, सक्खर का एरिया है, नागू का, गदीन का, तो शायद उसकी ये वजह तो नहीं है कि वो सी लेवल से नीचे है। ऐसे ये सेम प्रॉब्लम इज देयर इन बलूचिस्तान और ये जो आपके जलालुद्दीन खान के साथ जो कटिंग हुई है, वहाँ पे भी जो नशेब के एरियाज हैं वहाँ से पानी निकालना है बिकम वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। और लगता ये है कि अनफॉर्चुनेटली जितने अमीर हमारे जो जिम्मेदार हैं उन लोगों ने तो कुछ न कुछ कर लिया होगा, बट ये जो भाइयों के पास जो ज़मीनें हैं, चांसेस ऑफ पानी के खुद से गवर्नमेंट एफर्ट करके उसको निकालेगी, दे आर लुकिंग लीक। और ये अपने तौर पर ही जब खाली होगा तो लगता है कि अब तक जो एफर्ट होनी थी, जो पॉसिबिलिटी थी, जैसे लोग खाले वगैरह तो ये रास्ते बना के निकाल लेते, लेकिन जिस तरह से ये पॉन्ड टाइप बनने हैं पूरे इलाके के चारों तरफ से लैंड हैं, इनको वहाँ से जो है पंप करना इज अ वेरी कॉस्टली ऑप्शन, और ये शायद नेचुरली ही करना पड़ेगा। सर हम बोर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं कि अंडर वाटर टेबल के अंदर जो है ना वी कैन पुट इट डाउन। अगेन मैंने बताया कि वहाँ बोरिंग में भी प्रॉब्लम हुई है कि एक तो उन एरियाज में लगे नहीं हुए इतने गहरे बोर्स और सारा कुछ शुरू करना, उसके बाद ज़मीनें बहुत पीली भी हैं, जैसे बलूचिस्तान में चैलेंज इतनी हार्ड है वगैरह कि वहाँ पे जिन लोगों ने कुछ करना था, देखिए 3-4 महीने ऊपर हो गए, लोगों को फसलों की करनी थी, लीज पर ज़मीनें नहीं हुई। सो माई आइडिया है कि शायद अब ये नेचुरल रूट ही इसका that we are having certain disasters like surge and earthquake. I think it is not etc. To Dr. Yasmin Lari, specializing in such sort of housing. और luckily we have Dr. Asif Jha, जिन्होंने बहुत सारा काम हाउसिंग पे किया हुआ है। तो वो सिंध की ट्रेडिशनल जो बांसों से बनने वाला सिस्टम है वो सजेस्ट कर रही हैं, एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग जिसको हमें ध्यान देना चाहिए कि जो नेचर के साथ ज़्यादा मुताबिक रखने वाली चीज़ें हैं उस तरह की हाउसिंग के ऊपर हम खास तौर बट फुल टॉक Thank you very much, Hamid. Surprisingly, we are actually on time, and we have finished the first talk before time. So I want to welcome Asif Mahmood Jha, जो कि हमारे दोस्त और कासल हैं from KE 1986, and he has gone on to develop a huge public welfare infrastructure across the country. तो अगर मेरे जहन में अब्दुल सत्तारी के बाद कोई नाम आता है तो वो आसिफ महमूद जहा साहब हैं। तो इन्होंने अपने नॉर्थ कंट्री बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन की है, सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन गालिबन की है वाटर सप्लाई की, खासतौर पर डेजर्ट एरिया। उन्होंने वहाँ के मकामी लोगों को रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पानी की फराहमी की है, जिसके लिए हम सब सारी कौम की शुक्रगुजार है। और आजकल जो फ्लड इफेक्ट एरियाज में जो हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन है उसमें एक बड़ा की रोल प्ले कर रहा है। तो वेलकम आसिफ जहा। अगली हमारी टॉक है शुआब अहमद साहब की। शुआब साहब जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं बाय ट्रेनिंग, और इन्होंने इंग्लैंड से मास्टर्स किया है और उसके बाद PhD किया है रिन्यूएबल सोलर। So welcome, Shuaib sir.
नाम है मेरा, मैकेनिकल इंजीनियर। मैं मास्टर्स किया हुआ है प्रोसेस इंजीनियरिंग में, मेरी PhD इज इन रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम पॉलिसी साइड। अदर भाई ने मुझे टास्क किया था कि जी टॉक दी जाए, सो आई हैव प्रिपेयर्ड दिस प्रेजेंटेशन। इसमें जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज बेस्ड ऑन माई लाइफ, ऑन माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज, और हो सकता है इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश की। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे कि जी मैंने कोशिश किया है कि रूरल लाइफ में किस किस्म के टास्क हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है, जैसे कुकिंग, लाइटिंग, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, ड्रिंकिंग, सो ऑन। फिर उसके लिए व्हाट आर द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स टू अंडरटेक दोस टास्क, ताकि ये टास्क अगर अकम्प्लिश करने हैं तो इसके लिए हमें किस किस्म की एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। हमें बायोफ्यूल चाहिए, हमें हीट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और एनीथिंग एल्स चाहिए, ठीक है। फिर आई हैव ट्राइड टू प्रपोज फ्यू एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो इन चीज़ों को मीट कर सकें, ताकि ये टास्क जो है रूरल लाइफ में अकम्प्लिश हो सके, ठीक है। तो लेट्स गो टास्क हैं, तो कुकिंग, लाइटिंग, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, मशीन, ट्रैक्टर, हॉट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, टनल फार्मिंग, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है जी। ये टास्क हो गए जो एनर्जी की जो इन टास्क के अगेंस्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, और उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसके किस टाइम पे चाहिए होती, दिन को, रात को, सुबह, दोपहर, शाम, किस ड्यूरेशन में चाहिए, फ्रिक्वेंसी उसकी क्या है, रोजाना चाहिए, हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, ठीक है। तो उसको मैंने यू फिल किया हुआ है, बट अगेन ये डिपेंड करेगा हर गाँव में, हर जगह पर मुख्तलिफ होगी, बलूचिस्तान में अलग होगी, साहिवाल में अलग होगी, तो इसको यूँ एक फिल करके मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। लेकिन ये एज ए इंजीनियर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक टेक्नोलॉजी पूरा हर चीज़ को नहीं पूरा कर सकती, आपको कोई कम्बिनेशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आपने कुछ सेलेक्ट कर लिया कोई टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए मैंने ये क्राइटेरिया प्रपोज किया कि इट शुड बी कमर्शियली मैच्योर। ये ऐसी ना हो कि वो अभी 10 साल बाद इसने मार्केट में आना है और मार्केट में आके फेल ना हो। इट शुड बी कमर्शियली मैच्योर, मार्केट में हो और चलती हो, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा गरीब होती है, सिंपल होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसकी फिर रिपेयर मेंटेनेंस ये वो अंडरस्टैंडिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। सस्टेनेबल जरूर होनी चाहिए, इफ नॉट सस्टेनेबल इट शुड बी या सस्टेनेबल इफ नॉट रिन्यूएबल, जैसे ब्रिकेट्स हो जाती हैं, ये वाली चीज़ें जो विच आर नॉट रियली 100% रिन्यूएबल, लेकिन सस्टेनेबल जरूर है, जरूर लाइफ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस शुड बी लोकली एंड रेडीली अवेलेबल, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अदरवाइज टेक्नोलॉजी पंपिंग होती है, उसके बाद चलती है। वाइल डिप्लॉइंग सेलेक्टेड टेक्नोलॉजी क्रिएट ए ग्रेविटी वेट क्लोज बाय कम्युनिटी, हर जगह आप अलग अलग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपको एक खास लोकेलिटी में काफ़ी एक ग्रेविटी वेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर वो डिफ्यूज होती है। तो स्टार्ट विद, आप टाइटल में देखेंगे जो रेड में चीज़ है ये वो टास्क हैं जो हमने पहले लिस्ट डाउन किए थे। अच्छा, ये कुकिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क, उसके लिए बायोमास, उसकी बहुत सारी किस्में हैं, सारा कुछ ठीक है जी। और उसके लिए रिसोर्सेज जो इस्तेमाल होने हैं वो एग्री वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, सकंडा, ग्रास, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गाँव में, इससे कि सब कुछ हो सकता है। लेस प्रेफर्ड में एग्री रेजिड्यू है, ताकि वो किसी और काम में भी आ सकते हैं। नॉट प्रेफर्ड में ये है कि दरख्त ना काटे जाए, एनिमल का वेस्ट ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे और चीज़ें बनती हैं, जैसे बायोगैस वगैरह, उससे फर्टिलाइजर बनती है। यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट स्टोव शुड बी प्रेफर्ड, ये याद रखिएगा कि अगर हम बहुत ही ट्रेडिशनल चूल्हे में चलाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बायोमास चलता है और फिर उसकी कमी हो सकती है। एनर्जी एफिशिएंट स्टोव होना चाहिए, इसकी भी हज़ारों किस्में। आई एम सॉरी, मैंने टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मेरे जैसे ये निकल गया कि ज़रा ऑडियंस और तरह का होगा, आई थॉट के इंजीनियर होंगे, तो वो रिलेटिव तस्वीरें हैं, आपको उससे अंदाज़ा होता जाएगा। बायोमास ब्रिकेट कुकिंग के लिए सेकंड मेरी प्रपोजल है, बहुत सारी इनकी किस्में होती हैं। ये आप लास्ट साइड पे आप देखेंगे सिंपल सी मशीन से बनती है, ये मैनुअल मशीन भी अवेलेबल होती है, किसी भी चीज़ से बन सकती है, घास से, पत्ते से, लकड़ी से, एग्री वेस्ट से सारी। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि इसको कैरी करना आसान है, ये जलने में एफिशिएंट होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें। कुकिंग के लिए बायोगैस, बायोगैस का ये फ़ायदा है कि ये इसमें गोबर जाता है, जो गोबर बड़ा इजीली अवेलेबल है, ठीक है। और इसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं, उसमें से जो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया में ज़्यादा चला वो फिश डॉग प्लांट चला,
بٹ اسٹل اس کی ایک تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ کنسٹرکشن از ڈیفیکلٹ ویریس اینڈ کاسٹلی. یہ مہینہ لگ جاتا ہے اس کو بنانے میں, اتنی قیمت آتی ہے جو کسان دے نہیں سکتا. بٹ اینی وے یہ جب بھی پرائم منسٹر بھٹو کے زمانے میں, بعد میں جب بھی ہم نے انٹروڈیوس کرایا تو یہی پلانٹ انٹروڈیوس کرایا. دوسرا یہ ہے کہ فلیکسیبل, یہ آج کل ربڑ کے بنے ہوئے آتے ہیں, پچھلے 10-15 سال سے چل رہے ہیں, انڈیا میں بہت زیادہ چل رہے ہیں, افریقہ میں بھی چل رہے ہیں, پاکستان میں بھی ڈیٹ میں نے دیکھا ہے. برآمد یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جو جلدی ڈپلوائے ہوتی ہے, 1-1.5 دن میں یہ ڈپلوائے ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اس کو گوبر ڈالیں, مہینے ایک میں آپ کو بایو گیس ملنا شروع ہو جائے گی. کوکنگ کے لیے another thing is stick. یہ جو ہمارے سولر کوکرز ہیں, سورج پڑتا ہے, ریفلیکٹ ہوتی ہے, وہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے اور اس سے کوکنگ ہو سکتی ہے. اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن اب صرف یہ کہ یہ ہمارے کلچر میں میٹ نہیں کرتا. ہمیں پراٹھا بنانا ہے, ہمیں روٹی بنانی ہے, یہ ذرا پرابلم دے جاتا ہے اس میں. ہاں, عورت کو بعد دھوپ میں کھڑے ہونا ہے تو یہ وہ تھوڑا سا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جتنی گرمی ہوگی اتنا ہی ایفیشینٹ ہوگا, اسی کو اتنی گرمی لگتی ہے خواتین کو جو بناتی ہیں. تو اس تھوڑا سا یہ میں نے اس کو لکھا ہے کہ اس لیے یہ ایک ٹیکنالوجی ہے جو 7-8 سال سے میں دیکھ رہا ہوں آ رہی ہے. پاکستان میں میں نے کم ہی دیکھی اس کو, بٹ اس میں سولر پینلز ہیں, انڈکشن ٹیکنالوجی, بہت ٹیکنالوجیز آر ویری میچور. اٹس اونلی اے سسٹم انجینئرنگ آف بہت. کوئی انشاءاللہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یو کے میں شروع ہو گیا, سولر پینلز لگائیں, ڈائریکٹ بجلی انڈکشن کوکر میں دیں. انڈکشن کوکر شہروں میں تو اب استعمال ہونا شروع ہو گئے, نیٹ کلین کوکنگ ہو سکتی ہے. تو اس میں میجورٹی آف جو ہماری ڈشز وغیرہ ہیں نا, روٹی بننا یہ وہ توے شوے پہ سب گرم کرے گا اور بن جائے گا. اچھا, ہمیں لائٹنگ ایک another ٹاسک ہے جس کے لیے ضرورت ہے. آپ لائٹنگ میں اسپاٹ لائٹنگ ہے تو اس کے لیے آپ کو آئی ایم شیور آپ سب نے یہ دیکھے ہیں, مختلف چیزیں ہیں یہ اویلیبل ہیں. اس میں جو ایشو ہے ان کی جو بیٹری ہے وہ جنرلی پاکستان میں جو ملتا ہے وہ ویک ملتا ہے, وہ ایسی 9 مہینے, سال, سوا سال میں ختم ہو جاتی ہے. تو اینی بڈی انٹروڈیوسنگ اٹ, اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا میک شیور کی کوالٹی اس کی بیٹری کی اسپیشلی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر آپ نے اینجل لائٹنگ پہ جانا ہے تو اس کے لیے سولر فوٹو وولٹک اینڈ بیٹری یا پھر اسمال ہارڈویئر. اسمال ہارڈویئر کی لمیٹیشن یہ ہے کہ یہ وہیں ہوگا جہاں پانی اویلیبل ہے. یہ اندر یہ ٹائپ آف اسمال ہارڈویئر جو پنجاب وغیرہ میں چل سکتا ہے, یہ سبمرسیبل ٹربائنز ہوتے ہیں جو لو ہیڈ میں مطلب جہاں ہائٹ کم ہوتی ہے اور سلو واٹر موو کر رہا ہوتا ہے, یہ اس کے لیے بنے ہوتے ہیں. یہ 5-10 کلو واٹ تک دیتے ہیں, لیکن لائٹنگ کے لیے پرفیکٹ اتنا یہ لوڈ اٹھا سکتی ہے. پنجاب میں کیونکہ نہریں بہت ہیں, نہروں کے قریب یہ ٹیکنالوجی چل سکتی ہے. اگر آپ نے لائٹنگ ماس اس پہ جانا ہے کہ ہر گھر میں جانی ہے تو دین سولر فوٹو وولٹک از اونلی, یہی سب سے موسٹ سوٹیبل ہے. وہ بھی ہے لیکن موسٹ سوٹیبل یہی ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ اسمال سسٹم انڈیویجول ہاؤسز پریفرڈ ہے, کمیونٹی بیس نہ کیے جائے, کیونکہ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ کمیونٹی آن نہیں کرتی, وہ چلتا نہیں ہے سسٹم پہ رائٹ. کمیونیکیشن از another ٹاسک, جس میں آپ نے موبائل سے کمیونیکیشن ہونی چاہیے, آپ نے وائی فائی ہونا چاہیے, کچھ ہونا چاہیے. اس کے لیے پاور کی الیکٹریکل پاور کی بہت تھوڑی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے بہت سارے یہ چیزیں مل رہی ہیں, اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, اویلیبل ہوتی ہے. ایریگیشن, یہاں ایریگیشن ہے بہت یہ ضرورت ہے, امپورٹنٹ ٹاسک ہے. تو سولر فوٹو وولٹک دن کے ٹائم پہ ٹھیک نکال سکتا ہے پانی, ایکسیپٹ جیسے بلوچستان وغیرہ جہاں بہت گہرا پانی ہے, کیونکہ اس کو نکالنے میں زیادہ طاقت چاہیے ہوتی ہے, تو پھر بہت زیادہ سولر پینل چاہیے. لیکن پنجاب وغیرہ میں ٹھیک ہے, چکوال میں بھی داشا لگا ہوا ہے جہاں 200-250 فٹ پہ پانی ہے, وچ از ویری ڈیپ ہوتا ہے. پھر ہے جی بایو گیس آپریٹڈ انجن, تو بایو گیس بنائیں, اس سے ایک انجن چلائیں, انجن پمپ چلائیں, اور اس میں زور بہت ہوتا ہے نارمل یہ ٹرک انجن کی طرح, اپنے ٹریکٹر کے انجن کی طرح, لیکن اس سے کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی, کیونکہ بایو گیس بنانا ایک الگ فیلڈ ہے, پھر انجن چلانا ایک الگ فیلڈ ہے, پھر پمپ, اور بٹ اسٹل یہ بھی چل سکتا ہے آگے نہ. بایو ڈیزل another آپشن, لیکن یہ نیش ہوتا ہے, اب اس کا آپ کے پاس سیڈ ہونا چاہیے, یہ وہ سارا کچھ, اور اس میں جنرلی دیکھیں یہ ٹرانسپورٹیشن کا ایک پروسیس ہے, کیمیکل وغیرہ مکس کرنے پڑتے ہیں. بٹ لیکن ہمارے پاس ایک ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک پودا ہے, سکھ شاید اس کو نام کہتے ہیں, پنگین شاید اس کا کوئی باڈی کا نام ہے. اس کا جو سیڈ سے جب نکلتی ہے وہ ڈائریکٹلی آپ ڈیزل انجن میں چلتی ہے, وہ ہم نے مطلب چلتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے اور ایکسپیرینس ہے سارا, اس کو کوئی کیمیکل اس کی ضرورت نہیں. تو اس این آپشن, لیکن یہ ذرا کم ہے, کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز چاہیے جس میں سے یو کوڈ ایکسٹریکٹ دا آئل.
ड्रिंकिंग वाटर अगेन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर रहेंगे नहीं कोई, तो उसके लिए यही है टोटल सोलर पैनल अंडर विद सबमर्सिबल पंप्स और वाटर स्टोरेज है तो फेयरली गुड, ये मसला हल हो जाता है। दिस इज स्मॉल हाइड्रो, इसकी कई किस्में हैं, दिस इज रन ऑफ द रिवर, ठीक है जी। तो ये आप तस्वीर से आपको कुछ समझ आ ही जाएगी। इस लॉन्ग लाइफ होता है, 40-45-50 साल तक इसकी लाइफ होती है, बहुत चीप बिजली बनती है। जहाँ जहाँ हमारे पास पानी है जैसे नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में, तो ये बड़ी अच्छा है, सबसे द बेस्ट यही है, चीपेस्ट बिजली की, ठीक है जी। और ये बायोडीजल और उसकी निस्बत बहुत आसान है। ये मैकेनिकल पावर है वाटर की, आपने जगह जगह नहरों में भी देखा होगा, पंजाब में ये झाग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जहाँ पानी हल्का सा गिराया जाता है, ठीक है। और जहाँ भी पानी तेज चल रहा है तो इट्स वेरी इजी, इससे हो सकता है। बायोडीजल अगेन वही वाली चीज़ है कि सोकचैन का बायोडीजल बहुत ज़्यादा आपने काम किया हुआ है और मैंने देखा हुआ है, मेरे पास वीडियोज़ भी बेतहाशा पड़ी हुई है, बाद में आपको मैं बता सकता हूँ। अगर आपने पानी को गर्म करना है तो दिस इज वन ऑफ द वेरी चीपेस्ट तरीका है। ब्लैक पाइप ने उसको ये जो पेट बॉटल्स हैं इनको काट के चढ़ा दें, बिकम द सोलर सिस्टम, ये तो आपको सर्दियों में तो 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी देता है, कि इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं होती। इवन जो कोई लो टेम्परेचर इंडस्ट्री है उसमें भी ये चल जाता है। अगर नहीं है तो ये गोबर या ये जो रूढ़ी पड़ी होती है गाँव में, उसके अंदर भी एक गर्मी होती है, आपने देखा होगा, हाथ डाले तो गर्मी, उसमें ऐसे पाइप कर दें और उसमें कर दें तो आपको ये सुबह सुबह इनको गर्म पानी मिल जाएगा, या दिन में भी मिल सकता है। गांव में अगर कहीं ज़रूरत है, स्पेशली जानवरों को पिलाने के लिए इनको ज़रूरत होती है, सुबह को ठंडा शायद पानी नहीं पिला दें। अगर पाइप नहीं डालनी तो आप इसमें सिर्फ कोई मेटालिक डब्बा या प्लास्टिक का वैसे ही रख देंगे, पानी डाल के सुबह जब निकालेंगे तो गर्म मिलेगा। वाटर प्योरिफिकेशन करनी है, ये बहुत ही सादा तरीका है ये डिस्टिलेशन का, कि रखते हैं, गर्म होता है, इवेपोरेट करता है, ये सोलर उसकी शीट से टकराएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। पुराना तरीका है बट इस वेरी चीप, आराम से बन जाता है। गांव में कोई आपको इंडस्ट्री हो इस तरह का मसला नहीं है। अगर कोई पानी आया हुआ, पानी सूख नहीं रहा, तो उस वक्त एट दैट टाइम अगर पीने के लिए पानी चाहिए तो राइट साइड पे जो है ये वाटर कौन है, ये भी डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, ये को दिन में 1.25 लीटर तक पानी आराम से बना देती है और आप 1-2 आदमी पी सकते हैं। ये अमेरिका की कंपनी है, इसमें फिर भी बहुत अच्छा है और ये भी रिन्यूएबल है, क्योंकि इसमें कोई नैनो टेक्नोलॉजी है, सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके बाद प्योरिफिकेशन स्टार्ट करती है। 7 ईयर्स इसकी लाइफ दी हुई है, ये वर्ल्ड हेल्थ वालों ने कईयों ने इसको अप्रूवल दी हुई है। लेकिन अगर आपने बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है तो फिर नेचुरली यू नीड इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रोलिसिस हो या जो भी हो या रिवर्स ऑस्मोसिस है, तो उसके लिए फिर सोलर पैनल डाल सकते हैं। अगर फूड प्रिजर्वेशन करनी है तो दिस इज सोलर थर्मल, बहुत आसान है, आप समझ आ रहे हैं कि इससे खजूरें सूख सकती हैं, खुबानी सूख सकती है, अल्लाह भला सारा कुछ, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वैल्यू एडिशन हो जाती है। ये उसका थोड़ा सा बड़ा मॉडल है, अगर आप देखना चाहें तो इसका मतलब इजीली ये प्लास्टिक का उन्होंने वो लगाया हुआ है, क्या कपड़ा लगाया हुआ है और उससे ये चीज़ें चीज की। दिस इज फॉर्मिंग सोलर टनल फॉर ऑफ सीजन कल्टीवेशन, ये भी अब पंजाब में तो काफ़ी आम है बट रूरल इसमें जरूरत है। दिस इज ऑल्सो रिन्यूएबल एनर्जी है और इसको ये कर सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी कुछ और जो मेरे एक्सपीरियंस से ऐसे है कि प्लीज़ इंकरेज प्लांटेशन एज मच पॉसिबल, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये रिन्यूएबल एनर्जी को असिस्ट करती है। सनलाइट और नेचुरल एयर की सिचुएशन इन द बिल्डिंग, आई एम श्योर जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने सब ये देखते हैं और करते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी कंजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर देखिएगा जो भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम एनर्जी बचा सकते हैं, अगर एफिशिएंट चूल्हे हम लगा सकते हैं या कोई और चीज़ लग सकते हैं, शट बी डन, ठीक है। और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, इंजीनियरिंग नॉलेज बेतहाशा। ऑलराइट, so that's all. To stay within time. So it is quite remarkable कि कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इस्तेमाल ऑलरेडी हो रही हैं। हमारे पास 5 मिनट हैं सवाल और जवाब के लिए, लेकिन इस दौरान आसिफ शाह साहब आप तैयार रहिए क्योंकि नेक्स्ट टॉक आपकी है और IT वाले दोस्त अगर आसिफ शाह साहब की टॉक आप नेक्स्ट लगा लें तो जी असद साहब फरमाइए। थैंक यू सर, शेयर्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक। ये फोटोवोल्टिक सेल्स की बहुत ज़्यादा अपने वेरियस सॉल्यूशंस में हर जगह का इस्तेमाल हो रहा है।
पाकिस्तान में इंडियन इसमें ये बनते नहीं हैं और जो इम्पोर्ट हो रहे हैं उसकी वेरियस क्वालिटीज़ हैं इनकी लाइफ, तो ये एक इनिशियल कॉस्ट बड़ी हाई है इनकी और बार बार रिन्यू करने के लिए इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। इसका कोई और तरीका है या हम कोई फोटोवोल्टिक सेल्स हम बना रहे हैं यहाँ पे कोई बनने का कारण? अच्छा, उसमें दो बातें हैं। पहले जो आपने बाद में सवाल किया मैं जवाब देता हूं। अब इसकी कॉस्ट हाई नहीं है, ये चीज़ अब ख़त्म हो गया, अब बहुत कम है एक बार। दूसरा ये है कि इसकी कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं। इसमें बैटरी की रिप्लेसमेंट होती है, बहुत सिस्टम जहाँ बैटरी लगती है, बाद सिस्टम में रिकमेंड कर रहा हूँ विदाउट बैटरी, जैसे कुकिंग पे मैंने रिकमेंड किया है। अब बैटरी भी जब से इलेक्ट्रिकल कारें बनना शुरू हुई हैं तो आपको पता है कि बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा होगी। लिथियम आयन आई है, उसने को 12 साल 15 साल तक लेंगे, ठीक है। अब वो पुरानी बैटरियों की अगर थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करें तो इसकी वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर जहाँ तक ये कि आप क्यों ये ज़्यादा जाते हैं, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। एक प्लेट है, आप रख दें वो बिजली देगी, आपने कुछ नहीं करना। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द क्लीनेस्ट फ्यूल। इस तरह क्लीन तो ना धुआं है, ना नजर आती है, ना कुछ आता है। बस मोटर में डाल दें मोटर घूम जाती है, इसमें डाल दें चूल्हा चल रहा है। क्लीनेस्ट इज द फ्यूल ऑफ फ्यूचर, आना यही है, ठीक है। इसलिए ये रेकमेंड इसकी जगह इसलिए ज़्यादा होती है मेरे ख्याल। बट एनीवे लेकिन इसके लिए हर पे आखिर नहीं है। सर अभी आपने सोलर पैनल की समय बात की, अब रिसेंटली जैसे जब रिसेंटली जब पता किया है बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द डॉलर करेंसी की, तो इस सोलर पैनल्स वगैरह काफ़ी महंगे हो गए हैं। मतलब वी नो कि अब तकरीबन प्राइसेस जो हैं दे ऑलमोस्ट डबल्ड पिछले एक साल के अंदर। तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेटनेज इसके अंदर कोई सब्सिडीज़ वगैरह हमें कोई एक्टिवली इसके अंदर कोई नज़र नहीं आती? आप लोग इसके लिए क्या रिकमेंड कर रहे हैं? गवर्नमेंट को ज़्यादा आप लोग कुछ ना कुछ तो अपना फीडबैक देते हैं? पहली बात है नहीं, मेरी तरफ से कोई ऐसा फीडबैक नहीं है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। ये महंगा जो लग रहा है इट्स बिकॉज ऑफ डॉलर, ये हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है ऐसी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इंडस्ट्री बहुत कम है कि ये सोलर पैनल नहीं बनाती, बट एटलीस्ट देयर आर 3 इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान व्हिच आर मेकिंग सोलर पैनल। वो सोलर वेफर इंपोर्ट करते हैं, उसको ले करते हैं, उस पर मॉड्यूल बनाते हैं, वो बनाते हैं। 2 उनमें से इस्लामाबाद में, आई नो लिव इन इस्लामाबाद में जानता हूँ, ठीक है। फिर एक पहले क्वेश्चन का एक हिस्सा रह गया कि क्वालिटी का इशू। क्वालिटी का इंजीनियरिंग में ऐसे होता है कि इसके टीयर्स बने होते हैं, वो सर्टिफाइड अदारे होते हैं, वो सर्टिफाई करते हैं। टीयर 1 के अगर कोई लेगा तो उसमें क्वालिटी का दे देना विद इन अ ब्रांड ऑफ क्वालिटी। टीयर 1 इज परफेक्ट, वो 25-30 साल तक आपको लाइफ दे, ठीक। Please, sir, one more question, please. So, excellent talk. I just wanted to make sure that there are certain Western countries who are using windmill as a source of energy. So, are we considering that source in our country just to create that inexpensive source of energy over here? विंड मिल का ये है कि आपको एक खास स्पीड ऑफ विंड चाहिए। जनरली समझा जाता है कि अबाउट 5.5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो, ठीक है। तो वो हर जगह पर चलती नहीं। पाकिस्तान में कुछ कॉरिडोर है जब बहुत अच्छी चलती है, ठीक है। और फिर होता है कि विंड मिल की फ्लक्चुएशन, हवा जब चलती है मसलसल पानी की तरह नहीं चलेगी एक स्पीड, ऊपर नीचे रोकी चलती, उसके लिए आपको बैटरियाँ ज़रूर डालनी पड़ेंगी। बट एनीवे अगर कहीं विंड अवेलेबल है यू कैन। फिर ये कि विंड मिल इज अ बिग कॉम्प्लेक्स मशीन, वो एक मोटर की तरह है, उसको पंखा लगा है, उसमें आपको ग्रीस भी करनी है, साल के बाद कुछ करना है, ये वो खराब हो जाएगी। सोलर इज एक्सट्रीमली सिंपल, ठीक है ना। तो इसलिए अब गांव में वो उतारेगा ऊपर से करेगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने मेरी जाती ख्याल था कि ना। जी थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शहर साहब का जो कि स्पेशली इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं इस फॉगी एनवायरनमेंट में। वेंचर बैक टू इस्लामाबाद टू स्टार्ट ऑन दिस मीटिंग एज वेल। थैंक यू वेरी मच। आई वांट टू वेलकम ताबिंदा दुगल जो कि मेरी क्लास फेलो हैं और कैफका यूके की चेयरमैन है, चेयरपर्सन है सॉरी। और शी इज़ अ ह्यूमन डायनामो, शी इज़ एवरीवेयर, शी इज़ अ काइंड ऑफ ग्लोब ट्रॉटर एंड इंटरनेशनल jet setter, and she is here today to attend this meeting as well. Welcome, Tabitha. I'm not sure कि इमराना दीवाना आई हैं या नहीं। She was expected, लेकिन maybe वो भी पहुंच गई। I'm not sure
कि if you are set up and ready for the next talk yet, अगर असदुल्ला साहब की talk ready है तो मैं लोगों कर लेता है। ये talk जब setup कर रहे हैं तो I will ask Hamid to introduce Asdullah sahab. Asdullah now is heading the UN project, World Bank led project, water supply का जो है पंजाब के अंदर तो करें he'll introduce himself as well as the program itself, but Sir, it is really a great honor for me to sit as a guest speaker among these stalwarts for service. I'm Asdullah, I'm from Pakistan Administrative Service, and I'm from 43rd Command. In like 5 or 6 years' time, most of you will be aspiring to be in civil service as well, because we have a lot of people from King Edward joining civil service. It's another interesting thing about this symposium is that again, I'm hearing like a lot of interesting ideas because like our project is going to be implemented in rural areas of Punjab, and there are so many synergies which we can create because we are currently only working on water supply and sanitation and solid waste management. Since this symposium is on housing, I just want to ask you a question. When we think of dream living, what has come to our mind? Like any idea? So like when we say dream living, so we say like DHAs, Kent, Model Town, like all those big localities, everybody wants to live there, right? What's the reason, what's the basic reason we want to live there? Why not like somewhere, sanitation, what else? They have got management systems. Yeah, so the electricity and the sanitation. Exactly. All keep taken good care. Exactly. So we have talked about energy was there because they give you energy connections. Then they take care of your sanitation, they supply you clean drinking water, and then they manage your solid waste management. So that becomes a dream living for us. So but when we talk about rural area of Punjab, it's really a nightmare living they are having. If I quote some of the statistics, it says that like 79 million people do not have access to a decent operable latrine, and 79 women are unable to manage menstruation and hygienic food. And then 22 million people don't have access to safe drinking water. I'm talking about Punjab. So we have 110 million people, probably 110 million people. So these are the statistics. So we are really living a very nightmarish living in rural area of Pakistan. So this, after considering all the statistics, all the data that came in, the World Bank proposed a project to the government of Pakistan, which the government of Pakistan happily accepted it, and then negotiations were held at EAD, and then the project was handed over to local government and community development department in Punjab. So the name of the project is Punjab Sustainable Water Supply and Sanitation Project. So here's the table of contents for my presentation. So first I'm going to talk about what was the intellectual impetus for the project, and then I'm going to talk about the key project data, what the project is all about. And then we're going to talk about the project funding, how much funding we have for this project and who's funding it. And then we're going to talk about what is the spatial impact, what the seeds, what area we are catering for. And then we'll talk about what were the selection criteria for selecting the project. And then at the end, what do we expect to achieve by the end of the project when we have implemented the whole project, when we have developed the infrastructure for water supply and sanitation. So what do we expect from it? And then I'm going to talk about what interventions are we going to take. So the intellectual impetus for the project came from World Bank's WATCH diagnostic report, which said that if a child is born today and if we don't make any progress in our service for sanitation and water supply, a child born today would be 40% as productive as he should be when he reaches the age of 18. So हमारी productivity से 40% रहेगी अगर हम लोग आज अपनी investment नहीं करते किसके अंदर water supply and sanitation के अंदर. तो इसकी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है, हमारा इशू ये है कि हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है क्यों कम है, क्योंकि हमारे बच्चों में स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है. स्टंटिंग क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारा साफ पानी नहीं होता. आप लोग डॉक्टर्स हैं, यू कैन बेटर टेल मी, जब पानी साफ नहीं होगा मैल अब्जॉर्प्शन होगी न्यूट्रिएंट्स की
और हम न्यूट्रिएंट ब्लॉक में होंगे तो बच्चे बीमार होंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं तो आपकी स्टंटिंग होगी। जब स्टंटिंग होगी तो आप तो फिर आपकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जब आप व्हेन यू ग्रो ओल्ड, व्हेन यू बिकम एडल्ट। तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि इसके ऊपर अंडर इन्वेस्टमेंट बहुत है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के ऊपर, इसलिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है कि हम वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन और स्पेशल रूरल एरियाज के अंदर हम लोग काम करें। तो ये था इंटेलेक्चुअल इम्पेटस फॉर द प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक ने कंसीव क्यों किया, and then they proposed to the government to be realized that yes, we need it, because a lot of work is being done in urban areas, but nothing is being done in rural areas of Punjab. So the name of the project is Punjab Rural Sustainable Water Supply and Sanitation Project. The most important aspect of this project is that it has to be sustainable. I'll tell you how. And then World Bank is funding it. The project is being implemented through local government and community development department of Punjab. And now what we're doing is we're implementing this project through a state-owned company, which is Punjab Rural Municipal Services Company. And I'm glad to say that I'm happy to be the CEO of the company as well. And then we are operating, and then the most important aspect which I mentioned is the sustainability. And the sustainability would be, we as a company would be operating and maintaining the project. Once it's implemented, we'll take over the operations and maintenance. Initially, so previously practice here, what happens is कि आपने प्रोजेक्ट ले लिया, मेरे को हैंड ओवर कर दिया, 2 साल के बाद बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंट करते हैं, वी हैव वेरी गुड एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, बट गवर्नमेंट आपको हॉस्पिटल बहुत कुछ जल्दी बना के दे देगी, ओवरनाइट बना के दे सकती है, पर उसको ऑपरेट एंड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि अब हमारा इसके अंदर ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम अपना ऑपरेट एंड मेंटेन भी खुद करें। वी गोइंग टू कलेक्ट टैरिफ, वी गोइंग टू सप्लाई सर्विस भी इम्प्रूव करेंगे, लोग अच्छी सर्विस देंगे, लोग देंगे उसके ऊपर, और non profit no loss है, but sustainability has to be there. So 7 year gestation period है, already 2 years have gone, so we are currently in the phase of implementing the pilot project, so I'm going to talk about later. So it's a $552 million project. So 442 would be funded by the World Bank, soft loans हैं हमारे इसके ऊपर, और उसके बाद 20% counterpart funding है मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने करनी है इसके अंदर। The total जो है $553 million का project है, but looking at the scope we are going to have, I think it's going to go above this cost. So let's see हमें further funding मिलती है कि नहीं मिलती। So 16 तहसील्स है पंजाब की, जिसके अंदर हमारे पास नॉर्थ की तहसील्स है, नॉर्थ पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की, and then we have तहसील्स from साउथ पंजाब as well. Majority of the जो coverage है वो साउथ पंजाब में है, 53% जो है वो साउथ पंजाब की हम तहसील्स ले रहे हैं, और 28% सेंट्रल पंजाब से, 19% जो है नॉर्थ पंजाब से। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, डिफरेंट सर्वेज हुए पहले प्रीवियसली, उनके जो इंडिकेटर्स सामने आए, जो उनकी फिगर्स हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो है सिलेक्शन ऑफ तहसील्स हुई। तो सबसे पहली जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन ऑफ तहसील वो था कि जो एट सोर्स जो है पानी की कंटेमिनेशन कितनी ज़्यादा है, जिन तहसील की पंजाब की एवरेज से ज़्यादा कंटेमिनेशन थी उनको सिलेक्ट किया गया। इसी तरह एट यूज जब आप पानी पीने लगते हैं उस पर कंटेमिनेशन कितनी है, एक एवरेज पंजाब की निकाली, और जिन तहसील की एवरेज से बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन थी एट यूज, उसको हमने सेलेक्ट किया। एंड देन वी जिन तहसील के पास एक्सेस टू सैनिटेशन, क्वालिटी एक्सेस टू सैनिटेशन नहीं थी, उनको सेलेक्ट किया गया। एंड देन वहाँ देखा गया जहाँ पे स्टंटिंग बहुत ज़्यादा, ऑन एवरेज पंजाब में 40% स्टंटिंग रेट है, बट जिनका 37 to 40% ऊपर रेट आया उन तहसील को सिलेक्ट किया गया। और फिर बाकी पॉवर्टी के इंडिकेटर से डिफरेंट उनको देखते हुए ये तहसील सेलेक्ट हुई, और 16 तहसील पंजाब के अंदर हम लोगों ने सेलेक्ट किए। तो इनिशियली हमारा प्लान ये है कि 2000 विलेजेस हमने करने हैं इन तहसील्स के, 22,000 टोटल विलेजेस। सो वी आर करंटली वी आर इम्प्लीमेंटिंग 10% ऑफ द स्कोप। उसके बाद अगर ये इफ इट बिकम सक्सेसफुल, हमारा प्लान ये है कि ये उनके रोल मॉडल, उनके गेम चेंजर, तो हम पूरे पंजाब के अंदर जो हमारा रूरल एरिया था उनके अंदर इसी मोड में हम लोग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी सर्विस भी देंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग आवर प्रोजेक्ट, जो हम इंटरवेंशंस करने जा रहे हैं, टॉक अबाउट लेटर, हमारा प्लान कि हमें अचीव क्या करना है, जिस पे हमारे इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को लॉन्च करेंगे वर्ल्ड बैंक वाले सब, जो हमने एग्री किया है कि ये इंडिकेटर्स होंगे, तो विल मेक श्योर कि वी आर ऑन ट्रैक, वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड प्रोजेक्ट। फर्स्ट वन है कि हमें 60 लाख लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, WHO क्वालिटी वाटर प्रोवाइड करना है। उसके बाद हमारा है कि 75% हाउस होल्ड के पास जो है, जिनको हम अपना जो हमारा स्कोप है 6 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, उनके 75% हाउस होल्ड के अंदर साफ ड्रिंकिंग वाटर
WHO क्वालिटी वाटर होगा। इसी तरह 2000 के 2000 विलेजेस में हमने सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देनी है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लिटरली हमें क्या क्या उसमें प्रोवाइड करना है। फिर हमारा क्योंकि हम सस्टेनेबल होना है, हमने अदरवाइज ऑल मॉडल्स हैव फेल्ड। हमने जितने भी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ दी, सर्विस डिलीवरी दी, वो फेल इसलिए होगी कि हम लोग उसको ऑपरेट एंड मेंटेन ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास हमारा रुझान ही नहीं है। वी डोंट हैव दिस ट्रेंड कि जहाँ पे हम लोगों को कहेंगे हमें वो सर्विस दी, आप हमें पैसे दें इसके। अगर आप आज बात करें लाहौर जैसे शहर में अगर पानी है उसकी बात करते हैं तो वो हमें लोग पैसे नहीं पे करते। अगर हम वैसे बात करें 300 रुपये 400 रुपये पानी की बॉटल लेंगे, बीमार होंगे इसमें खर्च कर लेंगे, लेकिन जब when it comes to paying for water and sanitation services हम लोग नहीं करते। Unfortunate है, but we have to change this trend, otherwise there is no way। तो हम ये लास्ट मॉडल है, we were just talking, हम उससे भी चेयरमैन PND से बैठे हुए थे, उनसे ही बात हो रही थी कि if this doesn't work then there is no other solution। फिर हम बिल्कुल समझे कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यही मॉडल जो है ये साउथ कोरिया में स्टार्ट हुआ था, जब one village and then they implemented everything and then 40% हमने रिडक्शन कर लिया स्टंटिंग में। अल्टीमेटली स्टंटिंग जो अभी लेवल है लेट्स से 40% है, तो वी हैव टू गेट इट डाउन टू 25% स्टंटिंग रेट जो है। तो 4 बेसिकली कंपोनेंट हैं इसके इस प्रोजेक्ट में। फर्स्ट कंपोनेंट हमें सैनिटेशन और वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सेकेंड है हमारा बिहेवियर, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है वॉश के हवाले से, तो हमें उसके अंदर लोगों का बिहेवियर चेंज करना थ्रू सॉफ्ट कंपोनेंट, थ्रू कैंपेनिंग, बिहेवियर चेंज एंड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के थ्रू। देन सिर्फ सर्विस यदि इंप्रूव करनी है, बताएगा हम अच्छी सर्विस देंगे, लोग हमें पे करेंगे, हम ऑपरेटर मेंटेन करेंगे। एंड देन फाइनली इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करनी है, उसके लिए हमें हमारा तहसील ऑफिस है, सोना ऑफिस में, एंड हेड ऑफिस है हमारा लाहौर के अंदर कंपनी का। सो फाइनली टॉक अबाउट प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स। वाटर सप्लाई की बात करूँ तो हमने सोर्स पॉइंट पर डेवलप करना है, राइजिंग मेन से, और फिर मेन से जाके हमें घर घर में पाइप नेटवर्क देना है, जहाँ पर हाउस होल्ड्स की सेटलमेंट के अंदर 300 से ऊपर घर होंगे, हम उनको पाइप नेटवर्क देंगे। अगर 300 से कम है, 150 से ज़्यादा है, तो हम उनको स्टैंड पोस्ट देंगे, और अगर उससे भी कम है तो फिर हम उनको थ्रू सॉफ्ट कंपोनेंट वॉश प्रैक्टिसेस के थ्रू उनको एक्सप्लेन के साफ पानी किस तरह मेंटेन करना है। सेकंड है हमारा सैनिटेशन का, तो हम लोग बहुत लोकल बड़ी चीप सस्ती को टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे, AVRs एनारोबिक वेपर रिएक्टर्स को यूज़ करेंगे, कई बायोट्रिपिंग फिल्टर्स हैं उनको यूज़ करेंगे हम लोग। और जो हमारा मेन मकसद है, जो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक्स हैं उनको मेन से पानी को डिस्पोजल स्टेशन पे लेके जाके उसको नेचुरली ट्रीट करके एंड देन इसको डिस्पोजल करना है जहाँ पर ऑलरेडी वो डिस्पोजल हो गया है। एंड देन सर्विस डिलीवरी इम्प्रूवमेंट की बात करें तो हमारी अपना हेड ऑफिस है जिसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस देखेगा, और हमारे 16 ऑफिस के अंदर हमारे स्टाफ होगा जो उसको ऑपरेट एंड मेंटेन करेगा, और उसकी एग्जीक्यूशन भी जब चल रही होगी उसको देखेगा। एंड फाइनली हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम ट्रैकिंग करेंगे थ्रू MIS पूरा प्रोजेक्ट डे 1 से लेके एंड तक उसको हम करेंगे। करंटली इसका स्टेटस बता दूँ, सॉरी करंट स्टेटस इज दैट कि हम लोग अभी इस वक्त ये कर रहे हैं कि हम लोगों ने अपने 200 विलेजेस के लिए पायलट के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन कंसल्टेंट्स को हायर कर लिया हमने। दे आर वर्किंग द फील्ड, वो अभी हमारा कंसेप्शन रिपोर्ट्स आ गई हैं, बाद में फिजिबिलिटीज आएंगी, फिजिबिलिटी के बाद फिर डिटेल डिज़ाइंस एंड देन PC1 एंड देन गो विद द कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट। So these are the things. If you have any questions for the project and if you have any suggestions for the project कि हमें इसको कैसे बेहतर करेंगे, there have been a lot of failures in the past. हम चाह रहे हैं वो failures ना आए, उसको overcome किया जाए। If you have suggestions, if you have world best practices you have seen, please do share with me. Obviously sir, आसिफ जाफ़र साहब ने कहा था हमें रिक्वेस्ट है कि हमें रूरल एरिया में हमारा 50% स्कोप तो हमारा है ही साउथ पंजाब का। I would request कि हमें बताएंगे उधर किस तरह से क्या इंटरवेंशंस इफेक्टिव रही इनके लिए, तो अच्छा एक रिसोर्स हमें मिल गया आज हम सर आपसे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। थैंक यू। जब तक आप जी दो तीन कमेंट्स थी और क्वेश्चंस थे। मेरे दोनों पेरेंट्स आर फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। आई स्पेंट अ लॉट ऑफ माय चाइल्डहुड इन रूरल एरियाज एंड आई नो दैट व्हाट वर्क्स इन कोरिया इज नॉट गोइंग टू वर्क इन पाकिस्तान। तो आपका कोई मॉडल करीब का, जैसे इंडिया का या श्रीलंका का या बांग्लादेश का कोई मॉडल है नहीं जो काम कर सकता था यहाँ की? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आई थिंक दैट देयर इज लैक ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम टॉप का जो ब्यूरोक्रेसी है उसका बहुत लैक ऑफ ट्रस्ट है एट रूरल लेवल। नोबडी बिलीव्स व्हाट इज कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद और फ्रॉम लाहौर। सो देयरफॉर आई थिंक वो जो अपनी मदद आपके तहत पहले जो नंबरदार होते थे और चेयरमैन होते थे वहाँ के, आई थिंक इट्स बेस्ट टू वर्क विद देम रादर देन गोइंग इन एंड टेलिंग देम व्हाट टू डू बिकॉज पीपल डोंट लाइक दैट। आई डोंट ट्रस्ट पीपल कमिंग इन एंड डूइंग इट बिकॉज नथिंग वर्क्स। तो मेरा ख्याल ये है कि ये दो मेरी सजेशंस थी।
और तीसरी बात यह है कि लास्ट बात यह है कि जब रूरल एरियाज़ का एक सेटअप था जो बहुत सदियों से चला आ रहा था, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उनका अपना तरीका था, और जब ये अर्बनाइजेशन की एक वेव चली जिसमें उन्होंने खुद से घर में बनाए और उससे फिर हेपेटाइटिस कितनी ज़्यादा आई बिकॉज उनका वाटर सिस्टम और जो सॉलिड वेस्ट था वो सब जा रहा था. द बेस्ट थिंग वुड हैव बीन कि एक पाबंदी लगती इसके ऊपर कि nobody can build these latrines without paper proof. That didn't happen. People were building ad hoc latrines और उसके साथ पानी का सप्लाई आ रहा था. And it's really alarming that nobody had any concern about that. And lastly, I wanted to say that stunting का मसला जो है वो इतना सिंपल नहीं है, पानी पे नहीं है, is on a lot of other things as well. कि जो obesity है वो mainly rural area से आ रही है, if you know that. अगर आप देखें थर्ड वर्ल्ड तो उनकी obesity की जो है rural area से आ रही है, urban areas वहाँ पे लोगों को थोड़ा सा consciousness हो गई है. And lastly, I wanted to say that all over the world there has been increase in the height, subcontinentally. So there is a factor other than water, there is another factor that needs to be looked into. Thank you very much. Thank you, Dr. मैम जैसे वेरी वैलिड, बट हम लोग ने ये जो बात करी साउथ में स्टार्टेड एज किसी बंदे ने, प्राइवेट बंदे ने बात स्टार्ट किया, जिस तरह कि हमने खुद मैनेज करना है और इसको 3 चीज़ों को मैनेज करना है, सॉलिड वेस्ट को, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन को. तो वहाँ एक सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुई, बट जो हम लोग टेक्नोलॉजीज और जो चीज़ें कर रहे हैं हमने चाइना में स्टडी की है, वहाँ से हम लोग लेकर आएंगे. तो जैसे हमने स्टडी करी बायोटेक्निकल फिल्टर्स में लेकर आ रहे हैं, उससे भी हट के हम सब ये देखते हैं कि जो पास्ट में हमारी मिस्टेक्स हुई कि हम लोग क्यों किसी स्कीम को, वाटर सप्लाई की स्कीम को या सैनिटेशन की स्कीम क्यों हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाए, उसको हम ओवरकम कर रहे हैं. मॉडल वही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देना है हमने, बट उसकी ऑपरेशन मेंटेन हम अपने हाथ में रखते हैं. एक बात है. दूसरी बात है कि बिल्कुल ठीक है, लोगों को हमें लोकल्स के साथ में मिलकर चलना है. उसके लिए हमारा जो सॉफ्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम कहते हैं बिहेवियर चेंज कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके लिए अच्छे खासे पैसे हमने उसके लिए रखे, इसलिए कि हमने पहले लोगों को कैंपेन करनी है, एक वॉश की बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में उनको अवेयरनेस देनी है. सेकेंडली हमें उनको ये बताना है कि और जो सर्विसेज मिल रही है उनकी कॉस्ट क्या है और क्यों उनको कन्विंस करना है कि वो पे करें इस चीज़ के लिए. तो हमारा जो सॉफ्ट कॉम्पोनेंट है, जो जितनी बातें हैं कि बहुत सर हमारा ये नहीं कि विलेज ऑफिसर्स होंगे जो लोगों को कन्विंस करेंगे, उसके बाद जब ऑपरेटर मेंटेन करने की बात आएगी उसको भी वो जो है उसको बताएगा कोई अगर लीकेज है, पानी साफ नहीं आ रहा, देन पॉइंट आउट टू आवर कंपनी. हमारे ये कि एम्बेसडर्स ऑफ चेंज जो है वो लोकल लेवल पर होंगे, उन्हीं के साथ मिलकर हम ये करते हैं. मतलब हम ये नहीं कर रहे इस्लामाबाद से यार इम्प्लीमेंट करके चले, हम हमारा कॉन्फिडेंस है बेस ये करते हैं कि हमने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से पहले बिहेवियर चेंज करना लोगों का इस चीज़ के हवाले से, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उनको चेंज करें कि वो और अपने मार्क नहीं है. बाकी आपकी वेरिड सजेशंस हैं, हम इंशाल्लाह इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने इसके बाद फर्दर के डिस्कशन होगी, हम जो है डिस्कशन यू फील फ्री टू गिव अस एनी सजेशन जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस लगती है दुनिया में, अगर आपने देखी है वी आर रेडी टू इनकॉर्पोरेट. एक मेरा सवाल है, ये बताइए कि जहाँ तक मुझे पता है कि जो रॉ सूएज है रूरल एरियाज में दैट इज एक्चुअली ड्रेन्ड इनटू द फील्ड्स जहाँ पे क्रॉप्स होती हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. I guess it is probably very unhealthy and very dangerous. तो आपका भी एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता है ज़्यादातर रूरल पंजाब में कि all waste water including human sewage goes into the fields और उसको ये चीज़ एड्रेस करेगी. कि जो अभी जो ड्रेन होता है पानी वो एज इट इज अनट्रीटेड हो रहा है और वो अनहेल्दी है हमारा उसके लिए. तो हमारा प्लान ये है जो ABRs के अंदर हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, नेचुरल ट्रीटमेंट. जब उसके अंदर जो बैक्टीरिया तो हमारे इलेक्ट्रिक इंजीनियर तो मुझे वो टेक्निकल डिटेल नहीं पता उसका, तो उसकी जो BOD है वो कम करके फिर हम उसको जो है ड्रेन आउट करेंगे. उन्हीं फील्ड्स में जाएगी बट वो BOD का लेवल इतना कम होगा कि वो इतनी हार्मफुल नहीं रहेगी उसको. जी फरमाइए. This is for the students. The most important thing is that the holistic health care is the most important thing. And remember that prevention is the best treatment. What we are talking right now is that how we are going to prevent the diseases. And why we would have that? If you have gone through that 5-star doctor or a 7-star doctor, there is a one's competence which you need to acquire, and that is the community leadership. And if you don't know about these problems, you will never become a good community leader. And that is the reason that the people in the periphery don't believe in us. We need to learn all these things when we are going to go over there, and we have to give them that how they are going to have a healthy life.
I need to make a talk around 3 months back, and in that talk I was going through that how Medina was, there was no need for a doctor over there. There was only one thing, and that was good eating habits and good sanitation habits. These were the things which kept the people away from the diseases. So it's very important and take interest in this talk. Thank you, dear. Thank you very much for the question and comments. Asadullah, thank you very much. Excellent talk. I'm sorry, we have to carry on. So we have the next talk, which is by actually a recorded talk by Yasmin Lali. Yasmin Lali is actually a very senior architect. She is an Oxford graduate. Back in the days, she qualified in 1970s or 80s. She's involved in social housing, building for the people who could afford it. She actually built the Green Town. आपको शायद पता होगा लाहौर में जो रहने वाले हैं, कितने लोग लाहौर के रहने वाले हैं, तो वो ग्रीन टाउन का पता है. So उसके बाद सोशल हाउसिंग या ऐसी हाउसिंग जो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हो, जो कि गरीब लोगों के लिए वो बनी नहीं है, लेकिन यास्मीन एक्चुअली built major buildings, corporate headquarters, and major urban architecture in Karachi. लेकिन उसके बाद उन्होंने ये किया कि she has switched over to rural housing using indigenous materials. और indigenous materials में she uses limestone and bamboo. So unfortunately she can't be here today, लेकिन इन्होंने एक video presentation बनाई है, तो ये आप देखिए. Karachi and Gujarat, Sindh. The country could not be going through a worse crisis when 33 million people have been displaced and half of our population is living below the poverty line, with disease and hunger for millions of children looming large. Thank you so much for giving me the opportunity to present my program for rehabilitating 1 million households at a time. The title is Scaling Up, Barefoot Social Architecture of Bazaar for Co-building with Sustainable Materials, which in my case are limited to ubiquitous earth, magic lime and renewable bamboo. The 1 million program is based on the Bazaar pilot of 1,000 households, which has been completed between middle of September to end of November in Mirpur Khas in Sindh. As you will see, among the most important tenets is the provision of social and ecological justice to all. But first, a little bit about Heritage Foundation of Pakistan. As you will see, it's a non-profit organization, social and cultural entrepreneur, established in 1980 for safeguarding Pakistan's cultural heritage. But since 2005, it provides humanitarian assistance by linking heritage to, basically social and ecological-led initiatives. So, I learned a lot from heritage, which I applied to humanitarian field and vice versa. And I just wanted to show you where I'm coming from, because it's important to understand the work that I'm trying to do. So let's talk a little bit about Bazaar, which is Barefoot Social Architecture, which is social engineering for social change. It incorporates environmental, cultural and technical dimensions, helps rise from a cycle of dependency to a culture of pride and self-reliance. Fosters democratization of architecture for well-being and self-esteem of the marginalized. It promotes 4 zeros: zero carbon, zero waste, zero cost to donor, leading to zero poverty. So this is the way I would like things to go, and this is the way we've been working in the last 7 years now. And I just wanted to show you that the kind of impact that has been possible because of these particular ways of working. And something like 0.84 million people, or about 100,000, more than 100,000 per year, we've been able to target, and at least 12 sustainable development goals as well. And then I thought I'd just show you what post-flood international models have been like. And as you will see, on the left is an RCC frame house with CC block construction, and basically, it just costs a lot of money, anything between, you can see, $1,600.
reconstruction, and you can see again that according to an estimation, something like 50,770 acres of forests have been denuded, and something like 316,000 tons of carbon dioxide have been emitted. This was done after 2010 floods. And so, I'll show you my model, again, approximately at the same time, 40,000 units were built, and you can see there's no carbon emissions, no trees were felled, 1,750 villages, and 300,000 people were housed. And the one-room shelter, it cost only 30,000 at the time. So you can see it's all lime, brick, earth brick, and then bamboo roofs. All locally sourced, and everything is available right there. And this I found was the way to go because it immediately developed ownership of people. Then further I'll show you the bamboo structure that I've been built in Kotiji Park in 2014. I've been using bamboo for a long time now, since 2010 actually. 9 in fact, when we did the experiment. But this was really a major project we did with the public park. And this is the picture that was taken in 2022, 21st of August, to see how much water there was. And Kotiji is a place where there's something like just high water. So you can imagine what the state of this must have been. And then this is a picture that I thought I'd show you. It now shows it's a recent picture when the water has subsided, and you can see that all the structures are safe. So bamboo is proved to be the best material. It's well anchored, it's well connected together. It's amazing. Resilience is the one that saves it every time. So this is the material that I'm promoting, that now for immediate shelter, this is the best one. So at least one room should be built in that way. But later on, once they know how to do things, they can do many more. So I thought I'd present to you the case study of Pono village, Mirpur Khas, and its satellites. And it's really, you bring about resilience in community through community partnership. This is the important thing. It's not something that I have done or we have promoted or gone and done, but it's the people themselves who are partners in all this, and they're the ones who have done everything in terms of implementation. And now you see this is, I'm sure you're familiar with this, the 1/3 of Pakistan, as you see, in the water, which is something like the size of the United Kingdom, it's all submerged. There's some of the pictures from Al Jazeera. You can see that, the figures are that 33 million were displaced, 5 million families without shelter and food, and 10 million children exposed to disease. And you can see how on the left, the building is complex, huge monster building is collapsing, and on the right you see everything, they just have nothing but sea of water. This is what sin has been particularly. And then this is something that I very firmly believe in, which is to say no to handouts and yes to self-reliance. We have to empower communities for post-disaster development with women in the lead. This is the time for us now to see that women are given the role that they deserve, because that is the best way to go forward. It doesn't mean that we marginalize men, it just means that women are the ones who start taking decisions and moving on. So the empowerment, instead of handouts, self-reliance, instead of dependency, they should become partners instead of victims, and rise above adversity through skill training and capacity building. This is what I believe in, this is what we are trying to impart. So there are some of the structures that I've built over the years. You see on the left is a 39 brick masonry structure, 2014. It's a school building. In the middle is a women's center, first built in 2010 in the Yahan Sheikh. Yearly, they have there's an annual inundation, because this is in the Kachcha by the side of a river. And on the right is the 2019 Interval Research Center, which is in Makli. So these are all really structures that I've designed, and they seem to have done well, except the earth masonry structure, which did not do so well during these floods. And so I thought I'd show you the versatile bamboo structure, the log, the Lari octogreen, that is built with prefabricated panels of bamboo. And we train artisans in this particular way of building, and that's why they are so strong and resilient. Basically, 8 panels make the octagonal shaped room. Then you have the roof that is collapsible like an umbrella, and then you just finish it with whatever material might be available, whether it's matting or whether it's stone or whatever. And if you add 2 more panels, you can make a little schoolroom, 18 foot by 12 foot. If you add another 4 panels, then you make it into what we call a women's center or another community center.
So it's highly modifiable, it's a modular structure, and once people learn how to make the panels, that means they can be doing many other things at a later stage. So this is what I think is the best way to go forward at this time. And then, so now you see, this is the, basically the whole area. The green is really the floodplain, basically, and you can see that there are something like over 60 villages today, because different organizations are taking up this way of constructing, and they're all called zero carbon villages, and we are making an attempt to mark them all on a Google map. So if you would be interested, we can give you the link and you can see where today these things are being constructed by different organizations. It's not only ourselves anymore. Because the more we are able to decentralize and let other people do it, the better it is, I think. So this is the way we're going ahead. This is the Pono village in Mitwa Khas during floods of, in August 2022. You can see that how there was water everywhere. And at the time, this happened just before the floods, I think in the month of July. Bank of Punjab very kindly was able to give loans to these village Pullman committees, and so something like 70 units had been built, and they survived extremely well. This is one of the ones that was built just before the floods. As you can see, that's in a perfect condition. It's got the plinth, it's got everything. It's really the same bamboo structure that I showed you, which has been just finished off extremely well. And this is now a permanent structure. So taking that forward, basically Pono, as you see in the middle, is the markers. That's where we have trained workforce that have been trained to do various things, like from making the bamboo panels and build into other lime and mud structures. And you see that we have altogether 13 villages, 12 around it, which are ones that now are also dealing with different barefoot enterprises. This was important because that is the way we began to earn money as well. But all of them now were targeted so that within, and we shall show you how, in 10 weeks, almost all of them have become self-sufficient. And they have all the basic needs that they are required. These are training programs being run in different places, wherever they are. This is how to do with bamboo, how to have, how to make various things, how to make mud brick, lime mixing, decorating, all kinds of things. Now they're teaching each other. So it's all very community-led. And you can see women playing a very active role in this whole process. Now you see this is the prefab bamboo structure. You see on the left how you have the structure being put up, and then you can provide immediate enclosure by the reed matting or whatever you want to do for cover, and put a reed roof over it, and you have shelter immediately. And then incrementally you can keep on improving it. You can put the plaster on or make decoration, do what you want to do, because that means that you can just, it's your own whatever compulsion, what you want to do and how you want to do it. And this costs only 25,000 rupees per unit. That's all it costs to make it. And it all cost me to provide it to them. And then they're the ones who put in their labor and their effort. And this is another one because I felt that, tents were no use anymore, and we just wanted at least for a year before the next rain that people should be protected. So this is a 2,500 rupee unit, which is provided to people who then erect it, they put their own matting on it, they put their own roof on it, and then they decorate it. So it becomes livable, and at least it's safe for children. So I just wanted that somehow we should get to people quickly, and this is one way to do that. So as far as this Pono cluster and the whole number of villages, the 13 of them is concerned, we've got 100% completion of shelters, we've got something like 85%. Sanitation, lighting is about 100%, which is solar panels, water 100%, and clean food, which is available through the Pakistan Chula, which women make themselves. All housewives do them, and they make them into beautiful things. This is the way the decoration goes on. Just wanted to show you the creativity, the way the windows are being made. It's just incredible what they are able to do. And this is a slide to show you what kind of beautiful decoration they are able to make themselves. So you give people the opportunity, you allow their creativity to flower, and you will be amazed at what they are able to do. And then this is the sanitation. On the left is an eco toilet, and we have special seating seats which are Asiatic, but it separates the liquid from the solid. We teach them how to make compost out of the solid.
and the liquid goes into a pit, which is a kind of aquifer, a sanitation aquifer pit, and the water just trickles through. So there's no waste anywhere to be seen, there's no filth anywhere, and so it's completely hygienic. On the right, you see how you put the solar lights in and transform their lives, which is so important, because without these 5 things, and then you see on the left is the elevated hand pump, always elevated, as I learned from Mohenjo-daro, so that everything can be safe. So, and the hand pump is on the left, you can see how beautifully decorated that is. On the right is the Earthen Pakistan Chula, which is got the World Habitat Prize, and you can see how, again, women make them so beautiful and they use them, and so everything is clean now, the food is clean. That's what's important. And then, along with those 5 prerequisites, which I call the basic, rights for every family, we also have community disaster preparedness going on at the same time. Because we've taught them how to use lime and earth, and lime with earth is an amazing material. It protects it from water, it is extremely long-lasting, and lime just stabilizes earth. You can see our platforms are 100% complete, raised farming beds are done, external family enclosure walls are done, dining platforms, nobody now eats on the ground, they all have these dining platforms are made out of earth. And then external boundary walls have been done to thwart the water that might come in, bushes have been removed, community forests have been planted, and aquifer wells are starting now so that we can protect the villages from water just rushing in when the floods come. And then this is some examples. On the left is a solar water treatment platform made out of earth and lime with bricks. On the right you see raised farming, so the next time the floods come in, whatever they've got, the kitchen garden, whatever, it will all be safe. Similarly, on the left you see the enclosure walls, the boundary walls made out of earth and lime, and really clean enclosures now being made. And in the middle you see the picture of the raised dining platform, which is now becoming very popular for people to sit and have discussions and talks. And then this is a boundary wall around all villages have now boundary walls made out of earth and lime brick, that again is to protect them from water just rushing in. And as you will see, that the bushes have been removed, and that means that there will be hopefully no fire hazard anymore. The forests have been planted, every family has to do, I think, 10 trees, and so you've all got their forests coming up, inshallah. Within a year or 2, they will be grown into really pretty dense forests. Here is the Pono village cluster, with the center of the training village, and there are 12 others that are indulging in many different kinds of barefoot enterprises. These are all kind of products or produce for them to survive on, which are needed by people all around. So they are all able to sell now. And each one, I think the least one they're earning now is about 50,000 rupees. So almost each village today is now becoming a self-sufficient village. And I think that's what's important, that they are able to do that. So it's got fish farming, it's got, chicken sort of things going on, and there's also nursery and plants, and there's terracotta pottery, there's also matting. So all kinds of products that are useful for people, and they're selling them all around. This is the village, the Pono village is, the panels, the basic structural element, which is my prefab panel. They're made here, there's special training being conducted, and there's trained artisans there. Then this is one, a nursery village where plants are being grown, trees are being grown. This is a fish, the normal ponds, there's so many ponds around that area. They were lying unused, and now we are able to go fish in that. And this is the first fish that came out, 1.4 kilograms after 3 weeks of the culture that was put in. And Zola is being grown, it is feed for cattle, it's a natural plant. And then matting is being done, roof matting is being done, they're all earning money through that. And chicken are being reared, and also goats, and they all now beginning to sell and earn money, and also have food for themselves. Similarly, there's a pottery village that is just making pottery, is getting orders from outside, from many other villages, and that's doing extremely well as well. And the whole village now does this. So I just wanted to put to you how are we to get to 1 million households. This is what I want really. The immediate recovery rehabilitation of at least 1 million households. And we all have to work together for this. It is possible.
if we use, people are your partners, and if we give them the directions and build their capacity, and then they will do it. So these are all the different elements, delivery of rights-based elements, as you know, safe shelter, toilet, water, lighting, clean food, and Pakistan, and affordable, sustainable, locally sourced construction. That is the most important element. Nothing is brought from outside, it's all locally sourced. Adoption of co-building, co-creation, low-impact, low-tech techniques. Then 4 zeros, as I mentioned earlier, if you do that, inshallah, we will lead to zero poverty. And then partnership with local communities is important, skill training and knowledge sharing. And then community disaster preparedness is important. We must do it now, because next year is not far. Next year rains are not far. We don't know what will happen in July, August of 2023. So we must be prepared. And then barefoot enterprises for income generation are essential. And then women-led community engagement for speedy action. We're trying to stay very close to the schedule because we have an event in the library hall in Patella Block starting at 11 o'clock, Mr. Sir, जहाँ पे के जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं वो एड्रेस करेंगे. So we'll aim to get there. आप सब लोग जब यहाँ तक पहुँचे तो वहाँ तशरीफ ले आइए ताकि वहाँ पे मज़ीद बात हो सके. एक और बात मैं बता दूँ कि 11:30 बजे we have the continuation of the same kind of theme in the Patiala Hall. और उसमें ये सारे मौजूद मेहमान जो हैं ये स्टेज पे होंगे और आप सारे के साथ डायरेक्टली डिस्कस करेंगे. तो अगली टॉक जो है वो आसिफ जा साहब की है जिनको मैंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दिया है. और इसके बाद कामिल खान मुमताज़ साहब तशरीफ लाएंगे 20 मिनट के बाद, जो कि इज अ सेलिब्रेटेड ऑथर, वेरी सीनियर आर्किटेक्ट एंड अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, एंड ही विल टॉक अबाउट tradition and modernity. So I'm afraid I have to go, so I'll hand over the proceedings to Hamid, and the next talk is Asif Jafar. Allahumma salli ala Muhammad wa barik wa sallim. Dear colleagues, organizers and very dear students, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आज किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में मैं मौजूद हूँ और अपने मानवे उन्हों में, और इत्तफाक की बात है कि CSS में मेरे बैचमेट आमदुद्दीन साहब मौजूद हैं और जो किंग एडवर्ड में क्लास फेलो अकरम सईद और काबिंदा मुगल. तो मैंने डियर कलीग्स एंड स्टूडेंट्स, आपने पानी के बारे में बात करनी है, आपने तवज्जो से सुनना है कि पानी क्या है, पानी की इम्पोर्टेंस क्या है. पानी कहते हैं वाटर इज़ लाइफ, और पानी की मेरा ख्याल है जो जाने वाले हैं या चले जाएं या बैठ जाएं, बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क है. इफ़ यू वांट टू बिकम ए कम्युनिटी लीडर अलॉन्ग विद द कॉम्पिटेंट डॉक्टर, तो आज की टास्क आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि पानी की अहमियत हमें नहीं है. हम सुबह से लेके शाम तक जितना पानी ज़ाया करते हैं, तो पानी की कदर उस औरत से पूछिए जिसको 2 गड्ढे सर पे रख के थर पारकर में 10 किलोमीटर चलना पड़ता है, और पानी का एक गड्ढा वो दूर कुएं से लेके आती है और अपनी फैमिली और बच्चों को बचाती है. तो इस सिनेरियो में हमने जाके काम किया, और 2014 की बात है कि बड़ी मशहूरी हुई कि थर में और मिट्टी में बच्चे मर रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खुराक नहीं मिल रही. तो वी वेंट देयर, और भी NGOs आई. हम लाहौर से अपने डॉक्टरों के साथ गए. अक्सर NGOs तो कश्मीर चौक पे फ़ोटो सेशन करवा के वापस आ गई, मगर हम उधर रहे, हमने काम किया. हम हिंदुओं पे गोड पे, प्लीज़ तवज्जो से बात सुने, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता चलेगा कि इंसानियत किस तरह दम तोड़ती है और किस तरह से सिमटती है. आपको उन थर के सहराओं में मैं ले जाऊंगा कि जहाँ पानी की एक एक बूंद को लोग तरसते हैं, और जानवर पानी मिले बगैर मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं, ग़िज़ा की कमी भी होती है, और इस तरह की बहुत. तो 2013-14 की बात है कि हम भी गए, तो हम एक हिंदुओं के गोद में काम कर रहे थे. उनके हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी मेरे साथ थे, गोंदल साहब जो वाइस चांसलर थे पहले,
وہ ہمیشہ ہی ہیز بین ویری کائنڈ. ڈاکٹر براگ صاحب یہ ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھیجے ہوئے تھے. تو ہم ایک بورڈ میں کام کر رہے تھے تو ہمیں پانی کی طلب ہوئی کیونکہ ہمارے پاس جو منرل واٹر کی وہ بوتلیں ہیں اس وقت ہوتی بھی کم تھی تو وہ ختم ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا سائیں پانی ادھر سے تو نہیں ملے گا, 10 کلومیٹر دور کنواں ہے وہاں ہماری عورتیں گئی ہوئی ہیں, وہ پانی لے کے آئیں گی تو پھر آپ کو پانی مل سکے گا. تو ہم نے کہا چلیں وہ کنواں دیکھتے ہیں. 2013-14 کی بات ہے. ہم گئے, وہ کنواں دیکھا, بہت بڑا کنواں بنا ہوا تھا, سینکڑوں عورتیں ادھر سے پانی نکال رہی تھی. اور پانی بھی کس طریقے سے کہ 1 2 4 10 عورتیں یا مرد مل کے رسا کھینچتے تھے دور سے یا جانور کے ذریعے وہ پانی نکالتے تھے. اور انہوں نے پانی بھرا, گڑھوں میں بھرا, پھر ہم نے وہ ٹھنڈا پانی کیا. تو اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم بھی انشاءاللہ ہر میں کنویں بنوائیں گے اور ان لوگوں کو سیراب کریں گے. تو وہ ہم نے عزم کیا اور آج اس کا رزلٹ ہے کہ تھر کا کوئی گوٹ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہماری طرف سے بنا ہوا کنواں نہ ہو. ہم نے آلموسٹ 2000 کے قریب واٹر ویلز بنا چکے ہیں اور ان کے پانی سے روزانہ سینکڑوں ہزاروں جانور اور انسان سیراب ہو رہے ہیں. تو ابھی میرا خیال ہے کمپیوٹر والے لوگ شاید نہ چلا سکیں. تو واٹر ویلز جو پانی کا مین مسئلہ ہے تھر پارکر میں, تو ہم نے وہ عزم کیا کہ ہم کنویں بنوائیں گے. اور کنویں بنوانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ جس گوٹ میں تھر پارکر, آپ کو بتاؤں کہ تھر پارکر ایک ایسا میسمرائزنگ قسم کا ڈیزرٹ ہے. اگر آپ بارش کے موسم میں ادھر جائیں تو اس طرح کی جڑی بوٹیاں اور اس طرح کی بشیز کلرڈ اور بہت زبردست وہاں سما ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں وہاں, مور دانے پڑتے ہوئے پھرتے نظر آتے ہیں, سانپ بھی ہوتے ہیں. اور غربت اتنی ہے جتنی آپ تصور کر سکیں کہ ہندو عورت ایک ساڑی میں پوری زندگی گزار دیتی ہے. جب آپ بیسیکلی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ڈاکٹر, الحمدللہ ابھی تک ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں. ہمارے چیریٹی ہاسپٹل چاہ رہے ہیں کہ جب میں پیشنٹ بٹھا کے اپنے ساتھ عورت کو دیکھتا تھا اور اس کو ایگزامن کرتا تھا تو اتنی اسٹنکنگ اسمیل آتی تھی کہ بعض کا برداشت کرنا مشکل ہو جاتا. وہ کہتے ہیں کہ سائیں نہ پانی ہے نہ کچھ ہے, کیسے نہائے کیسے. ہم تو یہ ساڑی جب چیتھرے بن کے ان کے جسموں سے اترتی تھی تو وہ اتارتے تھے. تو ہم نے ماشاءاللہ عزم کیا, پھر ڈونرز آنے شروع ہو گئے. ہم نے پہلے تو شروع میں ہم نے عام پانی کے کنویں بنانے شروع کیے, جیسے صدیوں اولڈ بوکی سے پانی نکلتا ہے, رسی کھینچتے ہیں, وہ ماشاءاللہ بڑے کامیاب رہے آہستہ آہستہ. اور پھر ہمارا خاصہ جو میری NGO ہے اس کا نام ہے کسٹم ہیلتھ کیئر سوسائٹی. میں کسٹم سول سروسز میں چلا گیا, پاکستان کسٹم میں کام کیا. اور آج کل بہت سے لوگوں کو شاید اگر پتہ ہوگا کہ میں وفاقی ٹیکس مہتسب کے عہدے پہ ہوں, اور ٹیکس ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی ایشو ہو تو آپ اس کے سولوشن کے لیے یا کوئی ٹیکس آفیسرز آپ کو تنگ کر رہے ہوں اس کے سدباب کے لیے آپ فیڈرل ٹیکس ombudsman سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ فوری طور پہ حل ہوگا. تو پہلے ہم نے کنویں مینول ڈگنگ والے کنویں بنانے شروع کیے, مینولی آپریٹڈ. یہ آپ کو نیکسٹ ہم نے سیف ڈرنکنگ واٹر کی بات میں پاکستان میں ہم بڑی بات کرتے ہیں, رجیم چینج کی بات کرتے ہیں, بڑے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں. اگر آبادی کو سیف ڈرنکنگ واٹر مل جائے میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہوگا. کہ ساری بیماریاں جیسے اگر سیف ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز, واٹر بورن ڈیزیزز بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ماڈل ہے جیسے ہم بناتے ہیں. یہ میں خود جاتا ہوں اور میں خود جو ہے ہاں جی میں خود جاتا ہوں, وہ خود پھر آگے چلتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا ٹائم رہ گیا, تھوڑا سا ٹائم میں زیادہ لوں گے کیونکہ کمپیوٹر والوں نے میرا ٹائم دے. تو ڈراپ کے نتیجے میں تھر پارکر جو ہے 1.5 ملین تقریباً 17 لاکھ کی آبادی ہے,
اور اس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے ولیجز ہیں جن ساروں میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کنویں بنوائیں. یہ ہمارے ڈرنکنگ واٹر ویلز ہیں کہ اس طریقے سے لوگ پانی جیسے رکھتے ہیں. کیملز آ کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں کنویں پہ, کیونکہ ہر کنویں کے ساتھ ہم ایک واٹر ڈراف ضرور رکھتے ہیں جہاں جانور آ کے پانی پیتے ہیں. میری این جی او کا نام کسٹمر ہیلتھ کیئر سوسائٹی ہے, تو اس کے اندر ہم کام کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اس وقت آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ کیمکولین نے ود دا کوآپریشن آف کیمکا ڈاکٹرز, اپنا ڈاکٹرز اور FJMU الومنائی اس وقت سیلاب وغیرہ عام کے لیے جو گھر بن رہے ہیں, ہم سب سے زیادہ پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں 500 سے زیادہ گھر ہم بنوا رہے ہیں الحمدللہ. گورنمنٹ نے بھی, آپ کو یہ سن کے بھی خوشی ہوگی کہ مجھے میری سروسز کو ریکگنائز کرتے ہوئے 2016 میں 17 امتیاز اور 2021 میں فرسٹ گورنمنٹ آفیسر کے جن کو سروس کے دوران 2 دفعہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیکوریٹ کیا. ہمارے ویلفیئر ہاسپٹل میں, ڈسپینسری میں. پھر ہم نے ایک اور بات دیکھی کہ جو تھرپارکر کی لینڈ ہے, ورجن لینڈ ہے, اس کو کیوں نہ کلٹیویٹ کیا جائے. ہم نے کنوؤں کے ساتھ گرین فارم بھی بنانے شروع کر دیے تھے. تو ہم نے کلٹیویشن انہوں نے کی, تو وہ ماشاءاللہ اتنی زبردست رہی. وومن امپاورمنٹ کے لیے ہم نے بکری پال اسکیم شروع کی ہے. وہاں وڈوز کو ہم, جیسے یاسمین لاڑی بتا رہی تھی کہ ہم بکریاں لے کے دیتے ہیں, بکری 2 دفعہ سال میں بچے دیتی ہے, ان کا روزگار بھی بن جاتا ہے اور وہ بچے بکری کا دودھ بھی بچوں کو ملنا شروع ہوتا ہے. ڈفرینٹ ہمارے پروجیکٹ ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری, 4 صوبوں میں ہمارے مراکز ہیں. یہ فلڈ ریلیف جو رورل ہاؤسنگ کی بات کر رہی تھی یاسمین لاڑی, تو بڑا اچھا ان کا ہے سسٹم. آئی ہیو اسٹڈیڈ. تو ہمارے ساتھ جو ہے ریہیبلیٹیشن میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے, FJMU الومنائی ایسوسی ایشن نے, اپنا نے, MD انٹرنیشنل, یہ بھی ڈاکٹروں کی تنظیم ہے, اور کیمکا ڈاکٹر نہیں ہے تابندہ, کیمکا UK نے ہمارے ساتھ سب سے پہلے تعاون کیا, اور ان کے تعاون سے ہم نے وی ہیو ورک ان آل پروونسز. پہلے ہم نے ریلیف میں, ریسکیو میں کام کیا, پھر ریلیف کا کام کیا, اور آج کل ہم وی آر بلڈنگ ہاؤسز فار دیٹ. تو یہ فاطمہ جناب, ہم ڈاکٹر خالد مسعود گوندل اور سارے ڈاکٹر جو 2 دن پہلے میں رات کی سفر سے واپس آیا ہوں, تو وی ور دیئر, اور وہاں ہم نے ماشاءاللہ ایک پوری بستی بنائی ہے جس کا نام کاشان میں فاطمہ جناح رکھا ہے. یہ گھر ہے جی ماشاءاللہ پکے گھر. میں ان گھروں کا قائل نہیں, میں بیمبو, آئی ایم ناٹ فار بیمبوز اور وہ جاڑیاں, وہ ایک کو آگ لگتی ہے 100 کی 100 جھونپڑیاں جل جاتی ہیں. بلکہ میں نے ہم نے وی اسٹارٹیڈ دا پروجیکٹ فرام ہٹ ٹو ہوم, کہ وہ پروجیکٹ اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جھونپڑی سے نکال کر پکے گھر میں شفٹ کریں. تو ہم نے تو پکے گھر بنا کے دے رہے ہیں, اور ماشاءاللہ 500 houses are under construction at this particular moment. یہ گھر آپ دیکھیں کتنے زبردست. یہ MD انٹرنیشنل خیرپور میں تھے پرسوں, خیرپور میں یہ گھر بن رہے ہیں. یہ بھی MD انٹرنیشنل ڈاکٹروں کی تنظیم ذاکر اور کالج کے. یہ کیمکا UK, یہ تو آپ کے کئی کے ہیں, ان کے لیے طالب ہونی چاہیے. میں ڈاکٹر تابندہ نہیں ہے, اس گار میں ماشاءاللہ پورے بستی بنا رہے ہیں, اور یہ گھر ماشاءاللہ ودن 15 days پورے ہو جائیں گے. یہ اپنا کی طرف سے ہم راجن پور میں گھر بنا رہے ہیں, بلوچستان میں گھر بنا رہے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں گھر بنا رہے ہیں. اور نیکسٹ, تو یہ ہمارے گھر جو بنے ہوئے ہیں فرام ہٹ ٹو ہوم, یہ ماڈل ہیں, اور یہ پکے گھر ہیں, اس کے ساتھ واش روم بھی ہے.
ہم باہر بھی کام کرتے ہیں سیرین ریفیوجیز کے ساتھ ٹرکی میں اور روہنگیا مسلمانوں کے لیے بھی. یہ کنواں ایک سیمیٹریکل کنواں ہے. ورکر انوالوڈ ان ڈگنگ آف دا ویل. یہ بھی ایک داد گلوچ تھا. یہ بیچارہ کنویں کے دوران ہی ہم 12-15 سال ہو گئے ہیں. تو یہ داد گلوچ ہی واز اے ورکر. تو ایک کنواں جو ہے ایک ہی حادثہ ہوا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس میں یہ شہید ہو گیا اور کولیپس ہو گئی والس. مگر اس کی ڈیڈ باڈی نکالنے کے لیے ہمارے 15 لاکھ روپے خرچ ہوئے 2 months کیونکہ فیملی کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے جس حالت میں بھی ہمیں چاہیے. تو اس کی پوری فیملی کی جب سے یہ واقعہ ہوا 3-4 سال ہو گئے ہیں ہم لوگ آفٹر کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہمارے ڈفرینٹ کنویں کیسے بنتے ہیں. ایک اینٹوں کا کنواں بنتے ہیں, ایک سیمنٹڈ وال کا کنواں بنتا ہے. جی یہ کنویں ہندو عورتیں جو ماشاء اللہ وہاں کی ہے جو سندھ کی ہیں وہ مسلمان عورتوں سے زیادہ پردہ کرتی ہیں. اور ہم وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن کلر کریڈ اور ریس اور ریلیجن کام کرتے ہیں. ہم نے ہندوؤں میں ووٹوں میں 5%. یہ کنواں تصویر نیکسٹ. یہ کنواں کیسے نظر آتا ہے کنواں. اور یہ ماشاء اللہ ان کی آپ ذہن میں سوال ضرور آیا گا کہ ان کنوؤں کی عمر کیا ہے. یہ کنویں 50 سے 100 سال تک, بلکہ ہم نے جو اولڈ ویلز ریپیئر کیے ہیں وہ 500 سال پرانے. ماروی ایک داستان ہے, اس کا کنواں 500 سال پرانا تھا, وہ ہم نے ریپیئر کیا اور وہ اسٹل ورکنگ. اور ہمارے ماشاء اللہ ہمارا ایک مینٹیننس کا نظام ہے کہ سپرویژن بھی کرتے ہیں, نئے بھی بناتے ہیں اور پرانوں کی سپرویژن بھی کرتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم ان کا چیک اپ بھی کرتے ہیں. پانی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں باقاعدہ سیمپلز اس کے لیب سے, اور جو WHO کے اسٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق پانی ہو تو پھر ہم اس کو پانی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ استعمال کریں. یہ اینول انسپیکشن ہوتی ہے اینول یا 6 monthly. میں اکثر فریکوینٹلی اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہوں. ہم نے ریپیئر بھی کیا. نیکسٹ جلدی تو یہ سلسلہ سارا ڈونیشنز پہ چلتا ہے. آپ جیسے لوگ ڈونیشن دیتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے سیلاب میں حالیہ سیلاب میں سینکڑوں ٹرک جو ریلیف گڈس کے پہنچائے. اور ابھی بھی انوالوڈ ریہیبلیٹیشن, ایکٹیو ریہیبلیٹیشن جو 4 صوبوں میں ماشاءاللہ ہمارے گھر بستیوں کی بستیاں بنا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ بستیاں اور اس میں ٹائم تو لگتا ہے. اور ڈیڈیکیشن جو ویلز کو کوئی اپنے والدین کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہے, کوئی اپنے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہے, وہ اپنے پیاروں کے نام پہ آپ اس کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں. میں نے بکس بھی لکھی ہیں. آئی ایم آتھر آف 26 بکس. تو اس کا جو ہر پیاس اور پانی کی کاپیاں بھی موجود ہوں گی آپ کے لیے. ہم کولیبریٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز کی تنظیم کے ساتھ بھی. گلوبل گیونگ ایک ہے USA کی NGO, اس کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرتے ہیں. یہ دیکھیں مور مور آگے بیٹھتے ہیں تو عجیب نظارہ ہوتا ہے. ان کے لیے پانی کا بندوبست ہوتا ہے. اور عجیب بات یہ آپ دیکھیں کہ جب کنواں بنتا ہے تو سب سے پہلے جانور پانی پینے کے لیے ادھر آتے ہیں. 1500 سے زیادہ بن چکے. اس کے علاوہ ہم بلوچستان میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے جوہر کا گندا پانی پیتے ہوئے انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی. بچیاں ادھر سے پانی لے جا رہی تھی. تو ہمیں بلوچستان میں
हैंड पंप्स लगाने शुरू किए, छोटे हैंड पंप्स और बड़े हैंड पंप्स, और अभी तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ज़िला में हम 2000 से ज़्यादा हैंड पंप्स इंस्टॉल कर चुके हैं। नेक्स्ट, बस खत्म हो गई हाँ चलो। ये ग्रीन फील्ड्स हमारे माशाल्लाह, ये देख लें आप कि पंजाब के लहलाते ये थर में है, तो पार्क में जहाँ मिट्टी उड़ती थी, वेट उड़ती थी, वहाँ ये ग्रीन फील्ड है। जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक उसकी स्पेसिफिकेशन है सारी। ये हमारा फोन नंबर है, somebody is interested in ये हमारे पेजेस है, जज़ाकल्लाह है, बहुत डॉक्टर आसिफ जहाँ इज सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस ऑल। हमने तो इनकी सारी ज़िंदगी देखी है कि इन्होंने किस तरह से मतलब ये सिविल सर्विस में होते हुए भी रोज़ शाम को अपना फ्री क्लिनिक वो चलाते रहे हैं और आज तक चलाते हैं। और हम जो भी है बेटी भी डॉक्टर बन गई है, वो भी इनके साथ लगी है, तो ही इज़ अ सुपर सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस ऑल। और फिलैंथ्रोपी में अल्लाह भी यही सजा दे सकता है, हमें से कोई वी अनदर लेजेंड टुडे विद अस इज मिस्टर कामिल खान मुमताज़। आर्किटेक्ट लंदन से इन्होंने किया था 10 साल, ये 65 से 75 तक NCA के प्रिंसिपल रहे हैं। इज़ अ सेलिब्रेटेड फिगर इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। किताब भी इनकी जो है वो आर्किटेक्चर इन पाकिस्तान की वो बड़ी मशहूर किताब भी है। एंड ही विल बी टॉकिंग टू अस ऑन ट्रेडिशन, मॉडर्निटी एंड अफोर्डेबिलिटी विच इज़ राइट नाउ अ बिग प्रॉब्लम फॉर रिहेबिलिटेशन आफ्टर फ्लड्स। जी, कामिल खान मुमताज़ साहब। सिर्फ 3 मौज़ूआत पे कुछ गुज़ारिशात पेश करूँगा। पहली चीज़, जो मकान उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह और प्रैक्टिकल काम तो आपने देखा, बहुत से माहिरीन इन पे खुसूसन इस सैलाब के ज़माने में बहुत उम्दा काम और वर्क फिक्र भी सामने आई है। इंजीनियर साहब ने पहले बताया, यास्मीन नारी ने, आसिफ साहब ने। तो मैं कुछ बहुत ही बुनियादी बेसिक बातें करना चाहूँगा। अफोर्डेबिलिटी के बारे में, इसका ताल्लुक बराह रास्त कॉस्ट से है, और कॉस्ट में 2 चीज़ें हैं, डिस्पोजेबल इनकम और फिर जो माली जो मटीरियल, लैंड, स्ट्रक्चर, और एक बहुत अहम चीज़ है उसका लोकेशन, क्योंकि ज़मीन और जो मटीरियल है वो तो हो जाता है, लेकिन इसका भी ख्याल रखना होता है कि रिहाइश की लोकेशन, जो रोज़गार हैं या जो ज़रूरियात होती हैं समाजी, एजुकेशन, हेल्थ, रिक्रिएशन वगैरह, इनके लिहाज से अगर बहुत दूर हैं तो वो आमदरफ्त का भी कॉस्ट में शामिल होना चाहिए। सो पहली चीज़ जाहिर है कि इफ़रादी आमदनी, इस पे ज़रा मैं चाह रहा हूँ आपकी तवज्जो कि हम किस मुल्क की बात कर रहे हैं और यहाँ की हकीकत हक़ाइक़ क्या है। पाकिस्तान का औसतन पर कैपिटा पर डे आमदनी $1 पर पर्सन पर डे है।
اور مزید اگر تفصیل سے دیکھیں تو سب سے غریب کوئنٹائل، اگر کوئنٹائلس میں دیکھیں تو 0.6 ڈالرز پر کیپٹا پر ڈے، اور اسی طرح سے سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ کوئنٹائل تک 0.97 ڈالرز پر کیپٹا پر ڈے. صرف ففتھ کوئنٹائل ہے جس کا کہ آپ کہہ لیں کہ زندگی گزارنے جتنی آمدنی ہوتی ہے، یعنی 2.01 ڈالرز پر کیپٹا پر ڈے. یہ ایک طرف، اور عالمی سطح پہ جو تسلیم کیا جاتا ہے کہ غربت کا جو معیار ہے یہ 1.9 ڈالرز پر کیپٹا پر ڈے، یعنی عام پاکستانی ہاؤس ہولڈ نہ صرف غربت کے معیار سے کم آمدنی ہے بلکہ اس سے بھی کم، سبسسٹنس لیول سے بھی کم ہے. اور یہ صورتحال اسی ملک میں ہے جس کا کہ قومی اعتبار سے نیشنل GDP اتنا برا نہیں ہے. اٹس 4.2 ڈالرز پر کیپٹا پر ڈے. سو ظاہر ہے کہ یہاں کچھ بہت ہی کچھ عجیب و غریب حالات ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ملک جو ہے آمدنی کما رہا ہے لیکن لوگ بالکل ہی نہیں ہیں. تو آگے اب میں صرف بہت ہی مختصر بات کروں گا روایت اور جدیدیت کے بارے میں. یوں تو یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اس پہ طرح طرح کی باتیں اور تصورات اور خیالات ہوتے ہیں کہ غربت ہے، یہ جدیدیت کیا ہے، اس پہ تو بہت کم بحث ہوتی ہے کہ سب کو معلوم ہے جدیدیت کیا ہے، پروگریس، ڈیولپمنٹ، GDP بڑھانا، اکنامک گروتھ، اسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ماڈرنٹی ہے. جدیدیت روایت بہت آسان بحث کو کرنے کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو ایک روایتی معاشرہ تھا، روایتی معیشت تھی. ایک زرعی معیشت، کوئی انڈسٹری نہیں تھی. ہاں، پکاڑا میں ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی. پاکستانی روپیہ اس وقت 1947 میں $1 کے برابر تھا. 0 کاربن ایمیشنز تھے، 100% ریسائکلنگ تھی، اور اوسطاً آمدنی پاکستانی شہری کی 1.11 ڈالرز تھی، یعنی آج کی آمدنی سے زیادہ تھی، پھر بھی غریب تھے. دوسری طرف جدیدیت، اگر ہم کہہ لیں کہ اس وقت آج کا پاکستان نسبتاً ترقی یافتہ ہے، جدید، کم از کم جدیدیت کی خواہش اور جدیدیت بحیثیت ایک گول کہ یہ ہمارے سامنے روزانہ ہر سیاستدان، اکانومسٹ، کنسلٹنٹ دہراتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں جدید ملک بننا ہے، جدید ملکوں کی صفوں میں شامل ہونا ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت
ہم نہ صرف نہ روایتی ملک ہیں اور نہ جدید ملک. ہمارا ملک ایک گماشتہ ریاست ہے. نہ یہ فیوڈل سوسائٹی ہے نہ کیپٹلسٹ سوسائٹی. گماشتہ ریاست سے مراد میری کیا مراد کہ آپ اپنے طور پہ جیسے انجینئر صاحب نے بتایا یہاں کوئی قابل ذکر انڈسٹری بھی نہیں ہے. زراعت کا یہ ہے کہ ہم اپنی پچھلے چند سال اگر کچھ کماتے تھے تو وہ زراعت سے گیہوں بھی ایکسپورٹ کرتے تھے. اب ماشاءاللہ ہم گیہوں امپورٹ کرتے ہیں. اور ہر وقت ہر حکومت ہر پارٹی کا یہی نعرہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے کیچ اپ کرنا ہے ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ. اور اس وقت خیر باقی ملک میں تو جو ہے لاہور اس وقت دنیا کی بدترین ایئر کوالٹیز میں یہ مقابلہ رہتا ہے. کبھی دہلی کبھی نیو میکسیکو. اکثر پچھلے 2 ہفتوں میں لگاتار 3 دن ہم اس ریس میں اول نمبر پہ تھے. لاہور کا دریا دنیا کا بدترین انڈسٹریل ویسٹ پولوشن کا شکار ہے. اور یہ ملک آپ لوگ تو بخوبی جانتے ہیں 40% بچے میل نیوٹریشن سے کے شکار ہیں. نتیجتاً جیسے آپ نے کہا اسٹنٹنگ اور یہ مینٹل گروتھ بھی ہے. پاکستان کا آج یہ بھی سب کو پتا ہے روپے کی ویلیو کیا ہے. اور یہ جو 200-250 روپے کا ڈالر اس کا مقابلہ آپ کریں کہ جس وقت $1 کے برابر 1 روپیہ تھا. اگر آپ ہمارے ملک کی غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہی ایک اسٹیٹسٹک کافی ہے. اس سے اندازہ آپ لگائیے کہ ہم کتنے غریب ہو گئے ہیں. تو یہ ہمارا سفر رہا ہے ترقی اور جدیدیت کی طرف. یہ گماشتہ جو معیشت ہے یہاں ہم خود تو پیداوار کچھ کرتے نہیں بلکہ گلوبل کارپوریٹ انڈسٹری کے مصنوعات امپورٹ کرتے ہیں. یہ کمپیوٹرز موٹرنگ سیل فونز اور ان کو چلانے کے لیے ایندھن. نتیجتاً ہم بالکل دیوالیہ ہو چکے ہیں. اس سے بھی نیچے مقروض کہاں یعنی ایک نیشنل لیجسلیچر نے طے کیا تھا آج سے کچھ 10 سال پہلے ایک معیار تھی کہ اس سے آگے ہم 60% انڈیٹڈنس نہیں ہوگی جی ڈی پی کے مقابلے. اور اس وقت میرے خیال سے ہم جی ڈی پی سے زیادہ ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. اور یہ ہم کیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ اس کو افورڈ کرنے کے لیے ہمارے گورنمنٹس پارٹیز اکانومسٹ کہتے ہیں ایکسپورٹ بڑھاؤ. تمام ہیڈز آف ایکسپورٹ کموڈیٹیز کو جمع کر لیں تو سال میں اس وقت ہم $22 بلین ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ریمیٹنسز غیر ملکی پاکستانیوں کے اس سے زیادہ ہیں 31.2 بلین ڈالرز. یعنی میں یہ اس واسطے آپ کو بتا رہا ہوں
कि अंदाज़ा करिए इस वक्त वाहिद हमारा अगर अर्निंग है, हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे, पाकिस्तानी नौजवान, इनको हम पैदा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, तालीम देते हैं, सेहतमंद बनाते हैं। जब वो कुछ कमाने के लायक हो जाते हैं तो इन्हें हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। वो जो पैसे भेजते हैं उससे हम ये सब चीज़ें अफोर्ड करते हैं। यानी ये उनके पैसे वापस उन इंडस्ट्रियल ममालिक में वापस चले जाते हैं। ये मुख्तसर बस इतना ही कहना था मैंने। इन हक़ाइक़ को ज़रा आप सामने रखिए। गुर्बत का जो आलम है उसमें क्या अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। और दो तस्वीरें आपके सामने रख दी। लंबी बहस को छोड़ें, कहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। एक रिवायती मुल्क था, रिवायती मईशत थी, रिवायती माशरा था और ठीक था, बल्कि हम कमाते थे। वी वर अ ट्रेड सरप्लस इकोनॉमी, डॉलर्स कमाते थे, सेहतमंद थे निस्बतन, आमदनी भी ज़्यादा थी। लेकिन हम जदीदियत की तरफ जाने पे मुसर थे और अभी तक हम कहते हैं कि जी हम तो पीछे रह गए, अभी और आगे बढ़ना है, हमने कैचअप करना है। बल्कि हमारे आर्गुमेंट ये होती है कि हमारा क्या कसूर है कि फ्लड्स आ गई, हमने थोड़ी पैदा की, ये तो उन मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्कों ने की। तो वो हमें बल्कि रियायत दें और इजाज़त दें कि हम अभी कोल फायरिंग भी करें, कार्बन एमिशंस करें, और बल्कि आप हमें पैसे दें कि हम ये करें, क्योंकि हम तो पीछे रह गए, अभी आगे जाना है। अभी पीछे रह गए के साथ ये हालत है जो मैंने आपको बताया। सो आई जस्ट वांटेड टू प्लेस दिस इन फ्रंट ऑफ यू। आप आगे बहस करेंगे या कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच सर। क्वेश्चन आंसर वहाँ पे होगा। तो सिंस टाइम खत्म हो रहा है, आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर नकी साहब टू गिव सर्टिफिकेट्स डॉक्टर शोएब अहमद जिन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पे बात की है। जी डॉक्टर, उसके बाद है हमारे पास असदुल्ला साहब जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है वर्ल्ड बैंक के वाटर। डॉक्टर आसिफ महमूद जा हमारे न्याय मोहतरम जनाब कामिल खान मुमताज साहब now move to library hall where Minister of Health